टीम का कुल स्कोर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಘಾತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಚೆಕ್, ಹಲೋ ಹಲೋ. टीम का कुल स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಎಸ್ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಬಳಸುತ್ತ ಮರೆತು ಎಸೆತ ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಿಡಾನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 25 ರನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 25, 4 विकेट नष्टಕ್ಕೆ. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर. पहले वर्षीय क्रिकेट श्रृंखला जो कि SRR लैंड डेवलपर्स की ओर से खिलाई जाने वाला पहला वर्षीय क्रिकेट श्रृंखला बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के रूप में प्रारंभ हो चुका है. पहला मैच जो कि इंफोसिस वर्सेस सीमेंस मैच प्रारंभ हो चुका है. टॉस जीतकर पहले इंफोसिस ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. सीमेंस बल्लेबाजी कर रही है. श्रीशा स्कार के लिए ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. टीम का कुल स्कोर 26 रन 26, 4 विकेट नष्टಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಶಾ ಬಳಸುತ್ತ ಮರೆತು ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27, 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. 7ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಶಾ ಟು ಮಂಜು. ಬಳಸುತ್ತ ಮರೆತು ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಶಾ. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈನ್ನತ್ತ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 28.
ಸುಂದರದ ಹೊಡೆದ ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. पांचवा विकेट का पतन. टीम का कुल स्कोर 28 रन. नए बल्लेबाज प्रतीक देसाई जो कि नए बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर. श्रीशा गेंदबाजी संभालते हुए. शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन अंपायर के खिलाफ निराशा जाहिर करते हुए बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने उसको फेल डिलीवरी सुनाते हुए टीम का कुल स्कोर 28 रन. 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर. और ओवर मुक्ताಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर. इनिंग समाप्ति के लिए मात्र 12 गेंद बाकी हैं. 12 गेंद पर कितने रन बटोर पाएंगे यहाँ पर सिमंस की टीम देखना पड़ेगा. फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद हैं. मंजू स्ट्राइक पर है. इस बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास किया था, जोखिम भरा रन लेने में कामयाब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर. आप आए, अगले का आंखों देखा हाल सुनाए प्लीज. धन्यवाद. By SRR Developers and Shri Guru Kalpa. The season 1 of Bengaluru Corporate Cricket League has just begun between Siemens Healthineers versus Infosys Super Strikers. This is the 8 overs contest, and Tigers of Siemens Healthineers, they got 36 on the board. They lost 9 wickets, and they target of 37 in 8 overs. That is 48 degrees. That is looks to be a very, but this is a game of cricket. Total uncertainties, and you never know what's going to happen next. Years is going to respond with the ball. That is going to be interesting to see in the second innings. Let's take a look at the scorecard. Sachin Mali, the first opening batter, got out on 0. Then Manju, captain, leading from the front, got 21 in 23 deliveries, 2 sixes to him. Shreyas got out on 0. Anil Parihar got 4, got 0. Pranil got 2, Pratik Desai got out on 0, Rohit got out on 1, and Pawan Pennikar got out on 0. Fail in 8 overs, 4 extras. Bowling figures, Abhijit took 2 wickets, Shrisha took 1, Lucky took 2, no wickets for Praveen, and Pramod took 1 wicket.
Praveen Kulkarni gets fall on 0, second wicket fall on 0, fall of wickets, third wicket fall on 9, Jana got out on 4, fifth wicket fail on 28, sixth wicket fail on 29, 31, seventh wicket fall, eighth wicket fall on 36, ninth wicket fall on 36. Not a big partnership we have seen in this match in the first innings. The second inning is about to begin. Infosys strikers 2 in the middle. The first ball of the second inning, around the wicket. Oh, ball took the edge. It seems there was some sound. Maybe the ball brushed through the some body part and rested into keeper's hand. Hello, hello, mic check. This time a switch hit in the air and out. Second ball, fall for Infosys Super Strikers. What a great start for the Engineers. They have struck early. They have taken a wicket. Second ball of the first over and Infosys first blood. First wicket down. Score of 0. FZ is the batter, got out on 0. New batter in is Agastya. Anil Parihar. Oh, nicely driven. There in the covers. Tried to go for a cut shot again. Mozi on strike. The new over. Started off by Manish Charger. Oh, ball took the bottom edge of the bat. Chance of a run out here. Wanted to go for a directed misfield. May look for 2. No. They are satisfied with the single. They know that they have plenty of balls remaining with them. Even the single will work for them. No risk. No need to take a risk any at this stage at least. Mozi gets a single.
And this time a boundary, it seems. We have to wait and signal from the umpire is 4. That's a welcome boundary from Pradeep Reddy this time. Pradeep gets into the act, gets the first boundary. 3 balls he has faced and he got 4 runs for him. Last ball remaining from the second over and 7 runs already on the board for Infosys Super Strikers on the loss of 2 wickets. Oh, again attempt of a direct hit, but the batter managed to get a single. 8 runs on the board. End of the second over. Pradeep moved to 5. Muzzi batting on 2. 29 more needed. 36 balls remaining. Loud appeal there. Loud appeal for caught behind. Umpire is not out. Dot ball to start the over from Anil Parihar. Oh, this time we want to go for that slice shot to that point region. Lack of timing, lack of footwork. He couldn't reach to the ball, and ball rested into the keeper's hand. Yet another dot ball from Anil Parihar. Tried to go for a switch hit. Out appeal again. Almost all the fielders just standing those too near to stumps came forward to appeal for that again. One more attempt of switch hit. Switch hit is a very, very difficult shot. You need impeccable timing if you want to play that one. You need to be in a exactly proper position, and with the great timing you can play that shot either through third man or either through point, or even you can go for that shot through gully. Oh, one more attempt of a cut shot. Yet another dot ball. Four dot balls in a row so far. If 2 more dot balls, then this over will be the first maiden over of Bangalore Corporate Cricket League. 2 more balls is what Anil Parihar needs to take care of. 2 more deliveries. One more dot ball. 5 dot balls in a row. What a over this turning out to be for Siemens. They have a very low score on the board and they are fighting it out. We have seen in the past, even on the international cricket, the low scores, the team has defended. And here, the Siemens Healthineers, they are defending this, trying to defend that 36 runs. And this over, especially turning out to be a very, very good over for them. And that's maiden over. What an over from Anil Parihar. The first maiden over of Bangalore Corporate Cricket League
by Anil Parihar from Siemens Healthineers. After 3 overs, the score remains on 8 for the loss of 2. They need 29 more and 30 balls is what they have in the hand. Pradeep Reddy still batting on 5. 10 balls he has faced. And Muzi batting on 2. 4 balls he faced. Only one boundary so far for Pradeep Reddy in those 8 runs. 2, 2 runs, 2 bowling figures for Anil Parihar. Amazing bowling show. Manish Charger will continue with his second over. And he is going. Reddy on strike now. He is going to face Manish. Oh, good for sure. Very quick to take the first run. I would say Pradeep is not able to convert those singles in. Oh, there is an opportunity for run now. Manish was not standing behind the stumps, in front of the stumps. But one after 4 overs, the score is on 13 for Infosys Super Strikers. They need 24 strikers. 24. What they need is 24 runs. Manish Charger completed his spell. 2 overs, 10 runs. No wickets. Anil Parihar completed his spell. 1 wicket, 2 runs. Sorry, 2 overs, 1 maiden, 2 runs and 2 wickets. It's going to be interesting to see who's going to bowl that next over. A lot of discussion in the middle between the captain and the players. The next bowler.
Or simply excellent delivery. Wanted to go for that big one. Timing, lack of ball to the bowler. And was taken from Pradeep. What they have in the hand. Super Strikers getting slowly and steadily closer to that target. Driven straight. Wanted to go for the big one. Ball went to long on. Single taken. 16 required. Muzi on strike. Pradeep moves to 13. Surely. Therefore, stretching his arms in a unique way and signaling that wide. Done a great job. Fine leg. All 4 to 5 steps go for that catch. Keeping the eyes on the ball and catch taken by Jana. Muzi out. New batter in Aditya. Rohit is a new bowler and starts off with the white. New bowler and starts off with the white. 14 required to win. 18 balls remaining. Pradeep on strike.
He is in a form right now of 13 runs on the board, 16 balls he has faced. He spent that time, 16 balls in the middle. Yet the down the leg side delivery. This time it looks to be ball brushed through the thighs and went to keeper. So no signal from the umpire. Oh, base delivery. This time on the offside. Yet another ball. So 16 balls remaining, 14 is what they need. Pradeep looks to be very relaxed in the middle. He knows that he can go for the big shots, waiting for the right ball to come to him. Oh, nicely pulled away this time. Over the fielder's head, but fielder managed to get hands onto it. The miss by keeper and allowed 2 runs to batter. Well required now. Quite lucky on that occasion, Pradeep, that the keeper missed out on the throw. Otherwise, he would have walked back pavilion. 12 required. Twelve runs required. 15 balls remaining. No ball signal. last ball no ball है
11 needed now with that no ball and 2 runs. The Infosys Super Strikers, they need 11 more runs. The third umpire check was going on at that occasion for the no ball check. And the no ball came from the umpire. Free hit offered. So there's a bowling change now because of that no ball. No ball given for the throw action. Manju is the bowler. 4 balls remaining, 3 balls remaining. 4 balls. 4 balls. Oh, ball took the edge and missed by the keeper. Opportunity was there to get Pradeep out. But it was a free hit, so batter anyways would have survived. Lucky on that occasion, that ball took the edge. Keeper dropped it, but that was a free hit, so all safe for the batter. Way down the offside and white signal. Runs required in single digit now. 9 required to win. Aditya yet to open his account. He's in the middle for a while now, but not opened his account as yet. Full toss driven to that point region. Taken a single, opened his account, looking for 2. Pradeep happy with that single. 8 required now to win. Full toss, ball took the edge, racing towards the boundary at third man. Fielder behind it. Oh, nicely cut off. Couple of runs is what they've taken. Aditya wanted third one. Pradeep is not responding to that call. Satisfied with those 2 runs. 6 more needed now to win. 13 balls, 6 required to win. Dot ball to end the over. ಆರು ಆರು 12 ಬಾಲ್ ಬ್ರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾ ಕಮಿಂಗ್ अभी लेटेस्ट ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಬೌಲರ್ ಕೋಟೆ ಪ್ರಣೀಲ್ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್
Pranil continues and Aditya on strike. 11 balls, 6 runs is what they need. Quick running between the wicket, taken a single on that occasion. Oh, that was good delivery. Loud appeal from wicketkeeper. Umpire's not interested. Batter knows that he has not nicked the ball. Even he's not in mood to respond anything. 5 more needed to win for Infosys Super Strikers. 9 balls is what they have. Switch it and missed out on shot. Lack of timing again. Single taken. 4 required to win now. A leg by signal from the umpire. Wide now. 8 balls. 3 runs. Is what they need. Yet another wide and now 2 more required. 2 more to win for Infosys Strikers. Eight deliveries and 2 what they need. Strike. Yorker link delivery. Excellent one from Pranil. Oh, what a good show. They know that this match is slipping away from their hands, but still, the Siemens Healthineers, they are just fighting it out till the last moment. Wide signal again, scores are level. Only 1 run is what they need. The Infosys Strikers to win. Try to come down the wicket. He tried. Dot ball on that occasion. One request. Third umpire for that wide. So that was a fair delivery that was called by the umpire. So 7 overs completed and last ball remaining from the 6 balls remaining and 1 run to win.
This time dot ball to start the fresh over. The last one. 5 balls remaining. 1 run to win. Pradeep looks very, very, very relaxed. Quite a relaxed inning I've seen in the recent times. Chance. Third umpire signal. Wants to refer that to third umpire. There was no need to take any kind of a risk at this stage. They just needed 1 run to win. Infosys Super Strikers. The ball stuck again on the legs, and maybe that slight frustration to Pradeep that just made him to go for that run. And Aditya looks to be in trouble at the batter's end. We'll have to wait and see what the signal comes from the third umpire. So that's the third umpire came from, and that's the run out. Aditya walk back. He's got run out on that occasion. Pradeep tried to take that single quickly. After those 2 balls hit on his legs, he was slightly under pressure, it seems. 4 balls and 1 run is the equation for strikers. Can the Nears pull back this match in next 3 deliveries or next 4 deliveries? Can they get this match to super over?
they need. Oh, what a fielding! But they get that victory. The info strikers. They have won this match by 6 wickets. Excellent performance by Pradeep. Quite a relaxed inning. He showed that he knew that this match is in their hand and they have nailed it to perfection. Infosys strikers, they have won this match. Back with the next match. The live telecast bring to you Farooq. Player of the match for the first match goes to Lucky for 2 overs, 2 wickets in 9 runs he is given. ಹಲೋ, ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಷ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಷ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಲಕ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಹಲೋ ಚಿಕ್, ಹಲೋ. ಹಲೋ. SRR ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯ. ಈಗ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲೋ.
ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಷ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಷ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಮನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಕೀರವರ ಪಾಲಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಷ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶ ಆದರೆ ಮಂಜಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಡುವ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7. ಮಂಜು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಎಸೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾಲಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೊದಲನೇ ಜಯ ಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಸಿಮನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಷ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್
ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೂಡ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ, ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಮಂಜು ಅಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದೆಸೆದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಾಜಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ ಪಹಲಿ ಓವರ್ की समाप्ति के बाद 10 रन बिना कोई विकेट खोते हुए बॉश. After completion, first over score moves on to 10 runs without loss. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸರ ಅಂತಿಮ 42 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಷ್ ತಂಡ. SRR ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಹಗಲಿನ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸ್ಕಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್. 2ನೇ ಬಾರಿ. ಸಂದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ ಆನ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಾಲಾಜಿ ರವರ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಶ ಬಿರುಸಿನ 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಲಾಜಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಈಗ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಷ್. 1.2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಷ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಶ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಮಂಜು ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 14ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕವರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ವೇವ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಗತವಿಲ್ಲದೆ 2 ओवर की समाप्ति के बाद बॉश टीम का कुल स्कोर 15 रन बिना कोई विकेट खोते हुए बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यस ईगल्स के गेंदबाज, जितनी भी तारीफ की जाए बालाजी और राजेश नायक उतना कम है, क्योंकि पहली ओवर के पहले ही गेंद पर संदर्श ने 6 रन जड़िए थे. उसके बाद काबिले तारीफ की गेंदबाजी की थी बालाजी ने, सिर्फ 4 रन दिए थे 5 गेंदों पर. उसके बाद जो राजेश नायक ने गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना कोई विकेट खोते हुए कितने रन बटोर पाएंगे यहाँ पर बॉश टीम के बल्लेबाज देखना पड़ेगा. 8 ओवर का मैच है, 48 गेंद है, अभी भी 36 गेंद बाकी है इनिंग समाप्ति के लिए. टीम का कुल स्कोर 15 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. किस गेंदबाज को यहाँ पर परिचय कराएंगे देखना पड़ेगा. यस ईगल्स के टीम के कप्तान जी हाँ, किशोर को बुलवाया गया है तीसरे ओवर के लिए. स्ट्राइक पर है मंजू, जो कि नॉन स्ट्राइक पर है संदर्श. और बहुत ही बड़ा शॉट खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. एक से संतुष्ट होना पड़ेगा. इससे 1 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 16 रन. लंबी हिट मारना चाहते थे, बल्ले का सही संपर्क नहीं मिला. एक्स्ट्रा कवर में गेंद पहुंची थी. 1 रन से संतुष्ट हो रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज मंजू. संदर्श स्ट्राइक पर मौजूद हैं. एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है. कभी भी किसी भी समय चौका छक्का लगाने की क्षमता रखने वाला एक बल्लेबाज है. पहली इनिंग्स की पहली ओवर की पहली गेंद पर संदर्श ने खूबसूरत तरीके से 6 रन जड़ दिए थे. किशोर दूसरी बार तैयार होते हुए स्ट्राइक पर आए संदर्श. फुल टॉस गेंद थी, लाभ नहीं उठा पाए. स्कोर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा संदर्श. इस 1 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 17 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. एस ईगल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था. उसके बाद बॉश टीम ने 17 रन बटोर दिए हैं 2.2 ओवर में. शॉर्ट गेंद थी, खेल दिया था उसको फाइन लेग की दिशा में. क्या यहां पर 4 रन मिल सकते हैं, फिलहाल देखना पड़ेगा. बहुत ही अच्छी फील्डिंग. 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. टीम का कुल स्कोर 19 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. अंतिम 3 गेंद बाकी हैं तीसरे ओवर समाप्ति के लिए. मंजू स्ट्राइक पर है. क्या यहां पर मंजू लंबी हिट लगा पाएंगे, फिलहाल देखना पड़ेगा. बहुत ही खराब गेंद आउटसाइड द लेग स्टिक की ओर गेंद जाती हुई. एक अतिरिक्त रन
स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। बहुत ही अच्छी शॉट उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास में यहाँ पर कामयाब होते हुए 4 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा संदर्श जो कि उल्टे हाथों से खेला था इस शॉट को। खूबसूरत शॉट, 4 रन। टीम का कुल स्कोर 25 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। अंतिम 1 गेंद बाकी है तीसरे ओवर समाप्ति के लिए। किशोर अंतिम गेंद के लिए स्ट्राइक पर है संदर्श। फुल टॉस गेंद थी, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला था डीप एक्स्ट्रा कवर में। संदर्श ने थोड़ा सा चूक हुई फील्डर द्वारा। दो रन पूरा कर चुके संदर्श और मंजू। तीसरे ओवर समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 27 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद बॉश टीम का कुल स्कोर 27 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆರೆ ಆಗತವಿಲ್ಲದೆ नए गेंदबाज शमशेर। मंजू स्ट्राइक पर आए, नॉन स्ट्राइक पर आए संदर्श। क्या बल्लेबाज को यहां पर शमशेर बांध कर रखेंगे, फिलहाल देखना पड़ेगा। यहां पर मंजू 8 गेंद पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही खराब गेंद है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। यहां पर डाइव लगाया था कीपर जरूर लेकिन कैच लेने में नाकाम रहे। बहुत ही अच्छा प्रयास था, बाल बाल बचे यहां पर मंजू। बहुत ही अच्छी डाइव लगाई थी वहां पर कीपर ने। शॉर्ट गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए मंजू। लंबी मारना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था लेकिन कीपर थोड़ा सा गेंद से दूर थे। जंप लगाई थी, डाइव लगाई थी वहां पर लेकिन बाल बाल बचे मंजू। पहला वर्षीय क्रिकेट श्रृंखला जो कि SRR लैंड डेवलपर्स इसके प्रायोजक हैं, जो कि बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के रूप में यहां पर खिलाया जा रहा है। पहला मैच जो कि इन्फोसिस और सीमेंस के बीच चला था, उस मैच में इन्फोसिस ने जीत हासिल कर ली थी सीमेंस के खिलाफ, जो कि इन्फोसिस टीम के एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी लकी मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं। फिलहाल यहां पर दूसरा मैच प्रारंभ हो चुका है एस ईगल्स और बॉश के खिलाफ। टॉस जीतकर एस ईगल्स ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। फिलहाल यहां पर 3.1 गेंद पर
27 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से शमशेर दूसरी बार, मंजू स्ट्राइक पर है। थोड़ा सा मैच रुका हुआ है। शमशेर तैयार होते हुए दूसरी बार स्ट्राइक पर है मंजू। क्या यहां पर जीत का लाभ उठा पाएंगे मंजू, देखना पड़ेगा। शमशेर की दूसरी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया था, कवर्स की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर संदर्श ने तुरंत मना कर दिया। अगर रन लेंगे तो खतरा हो सकता था, ऐसी सूचना दी थी संदर्श ने, वहां पर रोक दिया था संदर्श ने मंजू को। इस 1 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 28 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। फिर से शमशेर होते हुए तीसरी बार। उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास किया था, वहां पर संदर्श ने बल्ले का सही संपर्क नहीं, रन का कोई अवसर नहीं है। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए शमशेर। 3 गेंद पर मात्र 1 रन दिए हैं। जवाब गेंदबाजी शमशेर द्वारा। चौथी बार संदर्श जो कि एक खतरनाक बल्लेबाज है, कभी भी किसी भी चौका छक्का लगाने की क्षमता रखने वाला बल्लेबाज है। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खराब गेंद, उसका लाभ उठा दिया था वहां पर संदर्श ने। फाइन लेग की दिशा में गेंद जाते हुए बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। इस 4 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर बाश का फिलहाल 32 रन। अगर यहां पर आप खराब गेंद डालेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 5वीं बार बहुत ही खराब गेंद, ओ माय गुडनेस। फील्डर गेंद फील्डिंग करने में चूके 3 रन मिलेंगे यहां पर। वाइट प्लस 2 रन करके लिए थे, तो टीम का कुल स्कोर 32 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। अंतिम 2 गेंद बाकी हैं, लास्ट 2 बॉल रिमेनिंग नाउ। 5वीं बार संदर्श स्ट्राइक पर है। इस बार संदर्श ने खेल दिया था मिड विकेट के दिशा में, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर 36 रन। अंतिम 1 गेंद बाकी है। शॉट गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया था, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट मंजू के बल्ले से निकलता हुआ शॉट गेंद, उसका लाभ उठाने में कामयाब होते हुए मंजू। लाजवाब बल्लेबाजी है। देखिए, आप इस तरीके से लूज गेंद डालेंगे तो निश्चित रूप से
खामियाजा भुगतना होगा। शॉर्ट गेंद का लाभ उठा दिए थे मंजू ने, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, 4 ओवर ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 42 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಗತವಿಲ್ಲದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 4th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 42 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. इनिंग समाप्ति के लिए 24 बाकी हैं। 24 गेंद में कितने रन बटोर पाएंगे फिलहाल देखना पड़ेगा। इनिंग समाप्ति के लिए 24 गेंद बाकी हैं। टीम का कुल स्कोर फिलहाल 42 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। एस ईगल्स के कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसके बाद जो बल्लेबाजी कर रहे हैं काबिल तारीफ है यहाँ पर बॉस टीम के बल्लेबाज। आरंभिक समय में जो कि आरंभिक ओवर पर थोड़ा धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं। मंजू हो या संदर्श हो, दोनों बल्लेबाज निश्चित रूप से जब तक क्रीज पर टटे रहेंगे तब तक मेरे ख्याल से निश्चित रूप से यस सीगल्स को खतरा मंडराता रहेगा। शायद यहाँ पर मैच को अपने काबू में रखना होगा तो इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करना बहुत ही जरूरी होगा। फिलहाल स्ट्राइक पर है संदर्श, जो कि 14 गेंद पर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 चौके और 1 की सहायता से। इस बार थे शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर मना कर दिया मंजू ने, तुरंत रोका। टीम का स्कोर 43 रन। मंजू स्ट्राइक पर है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर विकेट खोता हुआ ಮಂಜು का ವಿಕೆಟ್ ಪತನ್. ಮಂಜೂರವರ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಸ್ ತಂಡ. 43 ಓಟಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. दुर्भाग्य तरीके से हिट विकेट के रूप में विकेट खोता हुआ मंजू का। अभी भी संदर्श क्रीज पर मौजूद है, जो कि 15 गेंद पर 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। 15 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से। इस बार शॉर्ट गेंद पुल कर दिया था, लेकिन फाइनल की दिशा में गेंद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2026 का पहला वर्षीय क्रिकेट श्रृंखला, जो कि एसआरआर लाइन डेवलपर्स
इस क्रिकेट श्रृंखला आरंभ होने में वो बहुत ही बड़ा योगदान दिए हैं। उस संस्था को हम इस क्रिकेट श्रृंखला की ओर से बहुत ही आभार हैं और धन्यवाद समर्पित करना चाहेंगे SRR लैंड डेवलपर्स को। बहुत ही अच्छी गेंद, हवा में गेंद है, खतरा हो सकता है, देखना पड़ेगा, फील्डर वहां पर मौजूद। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कैच और एक विकेट का पतन, दूसरा झटका बॉश टीम के लिए। टीम का कुल स्कोर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद, लंबी हिट मारना चाहते थे वहां पर पवन कुमार, बल्ले का सही संपर्क नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं है, 2 विकेट खो दिए हैं, जो कि सलामी बल्लेबाज का विकेट खो दिया यहां पर बॉश टीम। मंजू और संदर्श इस बार जोखिम भरा रन लेने में कामयाब। इस एक रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 रन लेने में कामयाब। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 47, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 5th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 47, लॉस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट विकेट। अभी भी इनिंग्स समाप्ति के लिए 18 गेंद बाकी हैं। 18 गेंद पर कितने रन बटोर पाएंगे बॉश टीम के बल्लेबाज, देखना पड़ेगा। जो कि पहला मैच इन्फोसिस और सीमंस के बीच खिला गया था, उस मैच में 37 रन का लक्ष्य को पीछा करना था इन्फोसिस, तो अंतिम समय तक मैच आई थी। उसके बाद इन्फोसिस ने बहुत ही प्रयास के बाद मैच को जीत हासिल कर ली थी। इन्फोसिस के टीम की ओर से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। खिलाड़ी लकी ने मैन ऑफ द मैच प्रशस्ति के लिए भाजन रहे। ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ 1 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 48ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 54 ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಷ್ ತಂಡ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿ ಆಟಗಾರರು ಸಂದರ್ಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಜು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದರ್ಶ್ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆತ ಮಂಜು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ತಂಡದ 54 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಶೋರ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಕಿರಣ್ಗೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2ನೇ ಓಟವನ್ನ ಕಿರಣ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಶೋರ್. ಕರ್ಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 57 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 3 के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन 6 ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 57, लॉस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट विकेट. इनिंग्स अंतिम 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಉಳಿತಾ ಇದೆ. इनिंग्स समाप्ति के लिए बाकी हैं. कितने रन बटोर पाएंगे बॉस टीम के बल्लेबाज देखेगा. दोनों टीमों के बीच एक महासंग्राम शुरू हो चुका है यस ईगल्स और बाश के खिलाफ. दूसरा मैच है. पहला मैच जो कि इन्फोसिस जीत हासिल कर ली है सिमंस के खिलाफ. इस मैच में मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं लकी. जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से प्रदर्शन दिखाया था लकी ने. सातवें ओवर के लिए शमशीर को बुलवाया गया है. किरण कुमार स्ट्राइक पर है. बहुत ही खराब गेंद आउटसाइड द लेग की ओर गेंद जा रही थी. ने तुरंत वाइट करार देते हुए एक अतिरिक्त रन स्कोर पर जुड़ता हुआ टीम का कुल स्कोर 58 रन. शमशीर की ये गेंद बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया था उसको फाइन लेग की दिशा में.
2 रन लेने में कामयाब, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, तीसरा रन लेना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलता हुआ, बहुत ही अच्छी तालमेल किरण कुमार और शशि कुमार द्वारा। जितनी भी तारीफ की जाए इन दोनों बल्लेबाजों को उतना कम है। देखिए तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। क्रिकेट मैच में अगर तालमेल ना होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। चाहे अगर आप फील्डिंग कर रहे हो या बल्लेबाजी कर रहे हो तो तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। अगर तालमेल में कुछ गड़बड़ी हुई तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। तालमेल में गड़बड़ी हुई तो रनआउट का एक अवसर रहता है। अगर फील्ड में कैच लेने के समय पर तालमेल ना होगा तो कैच छूट सकता है। इस तरीके का एक घटना हो सकती है। और फुल टॉस गेंद थी, लंबी हिट मारना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज शशि कुमार, लेकिन रन लेने में नाकाम रहे। टीम का 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 गेंद बाकी हैं 7 ओवर समाप्ति के लिए। इनिंग समाप्ति के लिए मात्र 10 गेंद बाकी हैं। कितने रन बटोर पाएंगे, क्या यहाँ पर इमारत जैसा लक्ष्य को खड़ा कर सकते हैं बॉस की टीम के बल्लेबाज, देखना पड़ेगा। फिर से शमशीर, इस बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज कुमार ने, बहुत ही सूझबूझ के साथ शमशीर गेंदबाजी करते हुए के 10 रन में जाते हुए कोई अवसर नहीं है। शमशीर चौथी बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन। ये 4 रन की जरूरत थी बॉस टीम के लिए। उस कमी को पूरा कर दिया यहाँ पर शशि कुमार ने। क्या खूबसूरत शॉट है, आप रिप्ले में देख सकते हैं। अंतिम 2 गेंद बाकी हैं 7 ओवर समाप्ति के लिए। टीम का कुल स्कोर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से शमशीर 5वीं बार। शशि कुमार स्ट्राइक पर हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार यार्कर लाइन गेंद थी, लंबी हिट मारना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। 1 रन लेने में कामयाब। इस 1 रन की का कुल 66 रन के नुकसान पर। के लिए 7 गेंद मात्र बाकी हैं। 7 ओवर समाप्ति के लिए मात्र 1 गेंद बाकी है। फिर से शमशीर, आखिरी बार किरण कुमार स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार किरण कुमार ने उठाकर खेला, ये लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान 2 रन लेने में कामयाब। बहुत ही अच्छी रनिंग विकेट देखने को मिलता हुआ। किरण कुमार और शशि कुमार को जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत ही जबरदस्त है। 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन 7th ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 60, loss of 3 important wicket. 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 68, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ SRR ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SRR ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು SSR ಗೃಹಕಲ್ಪ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಹಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು SRR. ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ SRR ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 69.
ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 69, 69, 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ಬಾಲಾಜಿ ಎಸೆದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಬಾಲಾಜಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಲಾಜಿ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 70ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಷ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಓಟವನ್ನು ಸಿಮನ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಯದೊಂದಿಗೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 71ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಾಜಿ ಹೋದರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಶಾಮ್ಶೇರ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 71ಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಬಾಸ್ ತಂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೆಷ್ಟರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ನೀಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಷ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಾಜಿ 2. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಮಧ್ಯ ಹೊಡೆತ. ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸತತ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಾಲಾಜಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜಿತ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ 2. ರಂಜಿತ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಾಜಿ. 8 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 71, 5 विकेट नष्टಕ್ಕೆ. 8 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर. अगर यहाँ पर यस ईगल्स मैच को जीतना होगा तो 48 गेंद पर 72 रन बनाना होगा. 8 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 6 विकेट के नुकसान पर. अगर यहाँ पर मैच को जीतना होगा तो यस ईगल्स के बल्लेबाज 48 गेंद पर 72 रन को बनाना होगा. तो इनिंग्स समाप्ति हो चुकी है और अगले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर रवि जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं. धन्यवाद.
second match of the day for our league. Myself, Ravi, welcome you back on the live broadcast of this tournament. Second match of the day between New Stars cricketers Bosch versus S Eagles, and New Star cricketers Bosch got 71 runs on the board. S Eagles won the toss, opted to field. They invited New Star cricketers Bosch to bat first, and in 8 overs they got 71 on the board for the loss of 6 wickets, and the target is 72 for S Eagles. And the first ball is about to begin for the chase for S Eagles. Batter, predetermined shot, trying to go for a switch hit, ball way outside off stump and given wide. So first runs on the board for S Eagles straight away. Oh, this time a switch hit again. Attempt of a switch hit on the first ball and the second ball. The first ball was wide. Second ball raised to boundary for 4 to third man. Boundary came for S Eagles. They are with the flying start with that boundary. Five runs on the board for S Eagles. That's a very good start for them. Grounded shot this time to mid wicket. Easy single to the batter. Oh, that throw hit onto the non-strikers end batter. Surely some painful for that hit. Again played onto the onside and single taken easily. Seven on the board for S Eagles. They need 65 more runs to win in 45 balls. Swing it again. Oh, what shot that is! That ball racing towards the boundary again. 4 runs. The flying start for S Eagles. Mudassir is the batter who connected those 2 switch hits so well that in just 3 balls he is on to 9. Strike rate of 300. The score is on 11. Oh, this time he goes big. Straight. 1 bounce. Oh, there is a fielder. Couple of bounces to him. The fielder from that deep extra cover got to that and restricted batter for 2 runs. We are in the first over and the score is already on 13 for S Eagles. A wonderful start for S Eagles in this Bangalore Cricket League match number 2. In the second innings, they need 72 runs to win. That's the target for them. Oh, this time he goes on to the onside. Ball is in the air, will land safe. Oh, it looked as if the ball is going to land safe, but this particular fielder made ground almost 25 meters and hold it onto that catch. That's a screamer he has taken. What a catch that is to send Mudassir. The batter was in form, out. He exactly knew where the fielder was placed.
That was in a vacant area. But Kiran, the fielder, he was at wideish long on and he moved to that mid wicket. Oh, what a catch that is. What a catch. Amazing catch. First wicket down for S Eagles. After 1 over completion, the score is on 30 for the loss of 1 wicket. New batter in, Sagar. Chandrakant completed his first over, gave away 13 runs and took 1 important wicket. What a mixed start for this the second match in the second innings. Short pitch delivery, couldn't time that ball well. One bounce to the fielder at mid-on. No runs on the occasion. Shashi is the new bowler. Put it away this time. Oh! There was an opportunity at fine leg. Was an opportunity at wide square leg. And that was a great attempt, I must say. He dropped the catch, but that attempt was just mind-blowing. The batter gets an opportunity, but that was a super show from Bosch. In terms of fielding, they are doing a great job in the middle. $58 more needed to win. Short pitch delivery, this time pulled away to square leg. There is a fielder in the deep, will restrict the batter for single. The score moves to 15, 57 more needed. 39 balls remaining for S Eagles to get to that target. That's the equation right now. 57 more needed. 39 deliveries remaining. Pulled away this time. Straight to fielder. Excellent throw. Straight to the hands of the wicketkeeper. But the batter made ground well in time, and on that occasion, single added to the tally. This time pulled away. Again a switch hit. Single taken. That was a pull shot and single came on that occasion. Score moves on to 17 after 1.5. Last ball remaining from the second over. Oh, ball took the edge and set to keeper's hand. One more wicket down here for S Eagles. The Bosch is getting into the act. They know that 72 is a decent score they have on the board. They just need to pluck wickets at the regular intervals. 17 for 2 after 2 overs for S Eagles. One more batter back into the pavilion. Nice shining trophies are placed here to grab on the winner prize, the runner-up, the third prize and the fourth prize. All big trophies to grab on, the shining ones. New batter, we have Balaji.
New bowler we have Manoj, who will start the proceeding for the next over. "17 for 2 after 2 overs completion. 55 more needed, 36 balls remaining. Almost 9 runs per over is what the required run rate. Tried to go for a switch hit again, misses on that. Every shot these batters are trying to go for a switch hit, and every shot is not possible to go for that switch hit. They need to look for runs or the other clean bowled. Clean ball. This time he tried to go for that shot, and Yorker leg delivery on the leg side, off stump, out of the ground. Totally missed out and ball round his legs. Clean ball. Third wicket down for Seagulls. 17. Sagar is the man out. Bal Chandra is the new batter. Both the batters are absolutely new onto the crease. Yet to face a ball from these two batters. Both of them are absolutely new. 17 for 3 for S Eagles. They are on roll. The Bosch is on roll right now. Dot ball on that occasion from Manoj Shetty. Big swing of the bat, way outside off stump delivery. Wide signal by the umpire. Played onto the back foot towards point. There is a fielder from third man who will cut off. Taken a single. Played into that vacant area again towards point. That third man fielder will again get to that point region and will cut off. One more rally. 20 on the board for S Eagles. They need 52 more to win. Defensive shot. Single to end the over. After 3 overs, the score is on 21. 51 more runs needed. 30 balls remaining. That is 5 overs. 51 runs. That is 10.10. Sorry, 10.20 is what the required run rate is for S Eagles.
Nityanand is a new bowler, and that was a quick delivery. Good length delivery and a quicker one. Pitch slightly outside off stump, came inside, and batter had no clue whatsoever. Ended up dot ball. Oh, nice shot, but one bounce to the fielder. Tried to attempt over directed, and overthrows given here. That's a sad story for the fielding side there. The fielder was so confident that he thought that he's going to hit those stumps, but there was no backup at all, and ended up giving a single away as overthrow. Score has moved to 22:50 needed now. Oh, what a shot! That is what a shot! But there is a fielder. Oh, he got the hands of that to the ball, but he couldn't hold on to the catch. Only single taken on that occasion. Full toss, pulled away to deep mid wicket. There is a fielder, and excellent fielding, excellent throw at the same time. Nicely fielded at mid off. No runs on that occasion. Driven to deep extra cover. This time a good throw from the fielder. Straight into the keeper's hand. One more run taken. 47 more needed after 4 overs. 24 balls remaining, 47 needed. That is almost 12 runs per over now, is what the required run rate for S Eagles. They have 25 on the board after three wickets and 4 overs completed. What a shot that is. Sixer on the occasion. This time from Balaji. He goes for the big one. Score moves to 31 for S Eagles. 41 required. 23 balls remaining. Balaji gets into the act. Kiran Kumar is a new bowler. First ball sixer. Second ball again in the air. Second ball sixer. Back to back sixes for Balaji.
Back-to-back sixes for Balaji. Oh, pulled away this time. Straight to fielder at deep square leg. Single taken. Good to see that after those 2 sixes, he didn't go for any kind of a risk again. Took the single and rotated the strike, and that's a very, very good strategy from the batter. 34 more required, 21 balls remaining. Single taken on that occasion. Last 2 balls remaining from the over. 39 for 3. Oh, pulled away again. This time fielder is there. And he will not do any mistake. He will take the catch. He will send the batter back to pavilion. Manoj Shetty is a fielder on that boundary line at deep square leg. 4th wicket down for S Eagles on the score of 39. 33 more required. 19 balls is what they have now. The required run rate slightly mounting up. Oh, that's an excellent delivery. Five overs completed. 39 for 4. Nityanand will continue with the second over. 39 on the board after 5 overs. 33 more runs needed. 18 balls remaining. That's the equation for S Eagles. Bosch trying to take control in this match. Oh, nice pickup shot this time. There is a fielder. And 1 more wicket down. 1 more catch taken on the boundary line. 5th wicket down for S Eagles, and half of their side is back into the pavilion for 39. Nityanand strikes on a very first ball of the second over. He is into wickets. Kiran Kumar took 1 wicket. The bowlers among the wickets. Chandrakant took 1 wicket. Shashi Kumar took 1. Manoj Shetty took 1. Nityanand 1 wicket. Kiran Kumar 1 wicket. All the 5 bowlers are in the wicket in this innings for Bosch. New batter Rabin. Oh, 2 batters on same end and 1 more wicket. So 6th wicket down for S Eagles. That was absolute total suicide there in the middle.
The fielder had a ball is in hand, and the fielder was not watchful. The batter was not watchful. The batter even slipped on that occasion, and non-striker batter was already on to the striker's end. Both the batters found on the same end, and one more wicket down in the form of run out. 39 for 6. New batter Kishore walking onto the crease. Full toss in the air and one more wicket. This time Rajesh Naik out. New batter we have Sharat Kumar. Seventh wicket down for Ace Eagles. Again, both the batters are new onto the crease, yet to face the delivery, and Ace Eagles looks to be in trouble at this stage. Oh, nice shot. Straight to fielder at wideish tip mid wicket. Single taken. And this time a dot ball. Again a dot ball to end the over. After 6 overs, the score is on 40 for the loss of 7. 12 balls remaining, 32 required. 16 runs per over is what the required run rate is. This match looks like slipping away from the hands of Bosch. Sorry, from S Eagles. The Bosch has done a great comeback in this match. Initially, the way these batters were batting from S Eagles, it looks like they will get to the target. But those couple of catches on the boundary line and that one run out made lot of difference to Bosch team, and they are marching towards the victory. 12 balls, 32 runs required. Oh, that's an excellent delivery from Manoj. Pitched slightly onto the leg stump, came inside, just went over the stumps, just missed by a few inches there. Dot ball to start the over. In the air and misfield, and 4 runs on that occasion. So welcome boundary there for S Eagles. Score moved to 44 for the loss of 7 wickets. 28 more required, 10 balls remaining. Almost every delivery they need 3 runs to win this match. Oh, what a classic shot that is. Single taken on the occasion. Sorry, couple of runs on the occasion. 26 required, 9 balls remaining now. Big swing of the bat and a miss. Dot ball.
And clean bowled. Bowled round his legs again. That ball was right onto that middle end leg stump and clean bowled. One more wicket down. Eighth wicket down for S Eagles on the score of 46. Oh, classic shot this time. But there is a protection at long off. We'll get a single only. And that's the end of the over. 25 needed. 6 balls remaining. 47 for 8 after 7 overs. So last 6 balls remaining from the second innings for S Eagles. The Bosch needs to be very careful that they don't give away any loose deliveries here. Shouldn't give any room whatsoever to the batter to go for the big hits. They need to restrict the batter. May I have your attention, please? The Design Arc Challengers and BCON group. Both the teams, you are requested to go to your respective dugouts because we will be start the match immediately as this match finishes. So Design Arc Challengers and BCON group, both the teams, you are requested to go to your respective dugouts. Thank you. (47) 48 for 8. 24 required. 4 balls remaining. 4 sixes is what they need to win this match. And for S Eagles, this task looks really difficult as they are not finding the way. White signal this time. So 4 balls 23 is the equation. Single taken on that occasion. 50 runs on the board for S Eagles. 22 more required. 3 balls remaining, and this match has slipped away from the hands of S Eagles now. Given out, 1 more wicket down. 9th wicket down for S Eagles. Ranjit takes the wicket. 50 for 9 wickets down. Gane Siva is the new batter. Fuller length delivery, the Yorker one. They will get a single for sure. The score has moved to 51. 1 ball 21 is what the equation, and this match is already in the bags of Bosch. Bosch will advance to the next round. Driven straight. There is a fielder who will cut off. Single taken. 52
is what S Eagles got. They are short by 20 runs, and this match won by S Eagles by 19 runs. And New Stars cricketers Bosch have won this match by 19 runs. Player of the match goes to Shashikumar N.
Yuvraj on strike, with him Vignesh for Design Arc Challengers. They won the Design Arc Challengers won the toss, elected to field first. BCON Group is batting first, and for them, Yuvraj and Vignesh is in the middle as opening pair, and Durga Prasad started off with the bowling. Oh, excellent delivery. Dot ball. First ball single came, second ball dot. स्कोर देख रहे हो क्या? मैं स्कोर देख रहे हो? This time played on the back foot and single taken easily by the batter. And one more run to the tally. The score has moved to 2. Third match of the day between BCON Group versus Design Arc Challengers. Oh, switch it this time. Switch it this time. 4-run signal by the umpire, Madan Medikari. What happened to the previous ball? Sorry? 101 boundary, right? Yeah, boundary. Then dot ball now. Last ball coming up. We are in the first and on the board are 6 for BCON Group. White signal. Extra run board, extra ball to be bowled by the bowler. Down the leg side, wide again. Back to back wides from Durga Prasad. He was bowling with good control, line and length, but on that last delivery, he slightly lost the control. 2 back to back wides for Durga Prasad. Score has moved to 8. Big swing of the bat and a miss. Switch it, attempted. Dot ball. And that's after 1 over. The score is on 8 for BCON Group.
New bowler we have Velu. Try to go for a cut shot this time. Starts off with a dot ball. Velu. Oh, white signal way down the offside. Score moves to 9 with that wide, and we are in the second over. Ansar is the bowler. Short pitch delivery and pulled away this time. Over mid wicket field ahead. 4 runs, 1 bounce into the boundary line. The score has moved to 13. Dot ball on the occasion. Score has moved to 13 for no loss. Ansar coming round this time. Oh, nice pickup. 6 runs. That's a classic pickup shot from Vignesh, and Vignesh go big. That ball sailed over the boundary line for 6 runs. The score moves on to 19. Oh, nice shot in the air and this time out. That was a trap created by Ansar, but he let the batter go for those 2 shots in that same region, and the third one again he wanted to go for it. He got the elevation, not the distance, and ended up giving a catch into the fielder's hand at the boundary line at deep mid wicket. Wicket down here for BCON Group. They lost their first wicket on the score of 19. Last ball opening from the second over. Wicket down on the previous delivery. Ansar gets that wicket.
Put on the onside. There is a fielder. Will allow batter into the single. 2 overs completed. Score is on 20 for the loss of 1 wicket for Bicon Group. 2 runs per at the end of 8 overs. Current projected score is somewhere around 80. ಅಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ ಕೇಳಿ ಅಂಪೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ Akshay is the new bowler. Will start the proceeding for the next over. Down the leg side and wide signal. Madan Medikari, the experienced umpire, having a unique way of styling boundaries, sixes, and wide and no balls. Straight to fielder at mid wicket. I will give you one more mic. Sir, mic है उधर. Sir, mic है उधर. Join me. I love people when people join. Commentary ಹೇಳ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ. Okay, okay. It's on. Oh, nicely pulled away. Straight to fielder. One bounce. Just falling short of him. And 4-run single by the umpire. ಅಕ್ಷಯ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೆ 4. ಫೋರ್ತ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಶಾಟ್ taken a single easily. The score has moved to 30 for Bicon Group. Last 2 balls remaining from the over. Last 2 ball in the Akshay bowling ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Nice batting from Bayan. Yuvraj. 4. Akshay bowling ಆಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ 4 ಹೊಡೆದಿದ್ರು. Nice batting from Bayan.
34. End of the third over, and score is on 34. 3 overs completed, 34 for. Very good start for Vipro Group. They just lost 1 wicket, but they have maintained that the scoring rate that they are batting at. Ansar will continue with the next over. Ansar will continue with the next over. Second over of his quota. Full toss delivery, slow one, but way outside. Wide signal. .35 on the board. We are in the first innings of the third match of the day. Grounded shot. The fielder coming from long off to mid off. Restricting batter only for single. .36 on the board. Looks like the captain wants to have some field change. The fielder coming in from the wise third man, and nicely placed towards the point for single only, looking for 2. No, they are satisfied with the single. The score is on 37 for 1. By and 1 added to the 38 for 1 for Vipro Group after 3 overs. They are getting runs in boundaries and sixes, but they are keeping the strike rotating all the time and taking the single. Oh, this time big hit. I just mentioned that they are not getting runs in boundaries, but this time he got the sixer. What a shot that is. Looks like he heard my words that they are not getting runs in boundaries and sixes, and immediately he got the runs in sixes. The score moves to 44. Still in the fourth over. Last 2 balls remaining. Played on to the deep gully region. Taken a single only. Oh, what a nice shot it is in the air. Both fielder just missed out on it, just falling short of him there. There was an opportunity for wicket. The ball just falls short of the fielder there. End of the over after 4 overs. The score is on 46.
They still continue their scoring rate that they were scoring at, and that's the Dreams pick. .46 for 1 after 4 overs. BCON group. If this rate, if they are going to bat and they can look forward for at least 90 runs to 90 if they're going to score at this rate. We'll start the proceeding after the Dreams pick. The score is on 46. Yuvraj batting on 17. Tuchangu batting on 12. Grounded shot and will get a single looking for 2. There was a call for 2 and 2 runs taken easily. The score moves to 48. Tried to come down the wicket. Ball to side edge. Dot ball on the occasion. Put on the onside. Looking for wide signal from the umpire. Umpire feels that ball was well within the line. Line belongs to the umpire always. The line belongs to the umpire. No signal from the umpire on that occasion. The batter was confident that he will get that white signal. The score still remains on 48 for 1. Oh, what a shot that is! That ball just went up high in the air, and Mother Medigary dancing and signaling that sixer. BCON group crosses the 50-run mark. They are on 54 now. In the 5th over, they are making sure that they get at least one big shot each over, and the rest of the runs they are scoring with singles and doubles. Oh, nice shot there. We'll wait and see the signal from the umpire. Oh, just picked up before the boundary line. But still good running between the wicket. 2 runs is what they have got. The score has moved to 56. Played on the onside. This time played on the fine leg for single.
There was not much of a good connection between bat and the ball. Ball took the bottom edge and went to fine leg for single. Score is on 57. 5 overs completed. 18 balls is what they have now, and they are on 57. So in 18 balls, it's going to be interesting to see how many more runs they can add. Around about 11 plus runs they are scoring at this stage. So at the end of the 8th over, we can see at least around 88 plus runs on the board. But cricket is a game of total uncertainties, and you never know what's going to happen next. Are we going to see the big shots? Are we going to see wickets falling? We'll have to wait and see what's happened in the middle in the Bangalore Corporate Cricket League Season 1 2026, powered by SRR Group, SRR Developers. Durga Prasad is the bowler. This particular live broadcast, you can watch it on SS Sports Live on YouTube. With all the information you can get live out there on the YouTube channel. Oh, what a nice pickup shot! One bounce into the boundary line, 4 runs. That was a great time, well picked up, well positioned shot for 4 runs. The fresh over, the start off with the boundary, score has moved to 61. Trichangu moves to 27 in 15 deliveries. Still the fielder, the captain, trying to do some fielding changes at the last moment. The deep cover fielder coming in at covers, and one fielder on that long off, the deep extra cover pushed back. Full leg delivery, nicely negotiated, played on to the square leg for single, looking for 2. The call is given for 2 and easily 2 runs completed. The wicketkeeper is not into the proper position there to take that throw. He should have been standing behind the stumps and not in front of the stumps. Always difficult to turn around and dislodge the stumps. He should have been behind the stumps to take that throw. So it becomes easy for him to get the stump dislodged. The score moves on to 64. This time a sweep, reverse sweep. Can't call it a switch hit, but it was a reverse sweep and chance of a run out here. This time the wicketkeeper was right there in the position to take that throw, but the throw was quite wide. 2 runs is what they have got, and 66 on the board for the loss of 1 wicket. Yuvraj batting on 21, Trichangu batting on 28, Yuvraj on strike. Oh, nice shot. Landed safe. Couple of bounces to fielder, couple of more runs for BCON Group.
Last ball coming up from the 6th over. It's going to be interesting to see what's going to happen in the last delivery. Are they going to get a single or are they going to go for the big shot? They're into the death overs now. Oh, in the air. Fielder is there, but ball will go to him. Two bounces. Couple of more runs. Score has moved to 70. End of the over. After 6 overs, the score is on 70. Last 12 balls remaining. Still, the current scoring rate is about 11 plus. And with that, they might reach to 88 or 90 if they're going to bat in next 2 overs in a similar way. Harsha is the next bowler. Harsha bowling the second over and 7th over of this first innings. Waited for the ball to come to him. Played on the back foot. One bounce to the fielder at deep extra cover and couple of runs easily taken by the batter. Not an easy shot to play onto the back foot, but the batter Tishangu managed to get that shot. One bounce to the fielder. He moves on to 30 and the scoring moves on to 72. Way down the offside. White signal. Umpire Madan Medikari having no hesitation there for signalling that wide with his unique style. One more extra run added to tally. Score moves on to 73. Extra ball to be bowled by the bowler. Oh, this time for the ball again and excellent timing behind that shot. 4 runs. Boundary kill on the occasion. Lofted straight. Lofted. Lofted shot. Lofted shot. This time tried to go for a big swing of the bat onto the leg side. Missed by the keeper. Ball signal by the umpire. Single came on the occasion. 78 on the board. Oh, this time a switch hit straight to fielder. One bounce, looking for one, looking for two, and excellent running between the wicket. That's a great call from Yuvraj. He was looking for a second run and he got that. That's quite a very good confidence in the middle he's showing. He exactly knew that he will be able to complete those 2 runs and he got that. 80 on the board for the loss of 1 wicket. Last 2 balls remaining.
side. Couple of more runs. Score has moved to 82. Last ball remaining from the 7th over. Oh, nice pickup shot. This will switch it. 6 runs. What a shot that is from Yuvraj. The score has moved to 88. End of the over after 7 overs. The score is on 88. In the last 6 balls, we'll have to see how many runs they can add. If they manage to score the runs in a similar way, they might just cross 100. There is a possibility here, the way these two batters are batting, they might get to 100. But we never know. This is a game of cricket. We can just make the predictions here as per the current run rate. नहीं होगा तो सुब्रू ही डाल दो. वो put it इसके And Yuvraj retired in hurt out himself. Oh, nice pick shot. Excellent one. Oh, what a start for the over. The final over. Start from Tishangu. And Tishangu is reached to 4 boundaries, 2 sixes to his name. And we will have to see, can he get his team to 100? 94 on board already. Pulled away in the air. One bounce to the fielder will get a single. Saurav Badra is the new batter. In the air and in safe line. Looking for one, looking for two. Oh, chance over an idea. The non-striker batter just didn't respond to Tishangu, and Tishangu is run out. ಕೀಪರ್ Got out on 41. What a disappointment for Tishangu. What a great inning he played. Got out. The way he is not happy with that run out he got. Mahendra Gasbik, on the first ball, he came in like just as a finisher. Mahendra popular name, Mahendra Singh Dhoni MSD, and he just proving his name Mahendra there. First ball he faced and he went for the big one for the 6.
100 comes up for Bicon Group. 102 on the board. He goes one more time. One more big hit. That's 6 runs. Back-to-back sixes for Mahindra. Or shall we say that Mahindra Singh's Dhoni's innings is just playing there, just copying on that in the last over. Last ball remaining. Played on the onside over the field side. 3 sixes for Mahindra. What a batter! He came out of the crease, faced 3 balls, and all 3 balls sailed out of the ground. 18 runs they got in just 3 balls. Strike rate of 600. Bicon Group 114 is what they have got on the board. 115 to win for Design Arc. For Design Arc, 115 is needed to win. And to get all the live updates for this match in the second innings, I invite Mr. Farooq to get onto the mic. Thank you.
ಬಳಸುತ್ತ ಮರೆತಿಯ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಡಿಸೈನರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ BCON ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 115ರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸೈನರ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನರ್ ಸದ್ಯ 115ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸುಮರದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಲಚಿಕ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸುಜಯ್ ತೇಸಿಂದ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ದಾಂಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 4ನೇ ಬಾರಿ ಸುಜಯ್ ತೇಸಿಂದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಜಿತ್. ಕಾಟನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಜುಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಸಿದ ಮರುತಿ ಎಸೆತ ಬೀಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 42 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 109 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಯಾದವ್ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲಿ. ಬಳಸಿದ ಮರುತಿಯ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅಂಚಿನಿತ್ತ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 7ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7 runs, loss of 1 important wicket. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹುದ್ದರಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 40 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 108 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನರ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನರ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು. ಬಹಳ ಶುತಮರಿತ ಎಸೆತ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟರ್ ರಕ್ಷಕನ ಬಗಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ
ಮುಂಜೂಣಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇವ್ ಪಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಕಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾದವ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾದವ್. ಯಾರ್ಕರ್ ಲಿಂಡಲ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ಕಾರ್ಕಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾದವ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ಕ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. आफ्टर कंडीशन 2 ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 7 रन्स, लॉस ऑफ 1 इंपॉर्टेंट विकेट. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी चाहिए 108 रन 36 गेंद पर. अगर यहाँ पर मैच को जीतना होगा तो डिजाइन आर के बल्लेबाज खूनखार तरीके से, धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, तभी कुछ हो सकता है. नहीं तो निश्चित रूप से BCON इस मैच को जीत हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई अनुमान नहीं है. ಸುಜೇತ್ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ ಪಡ. पहला वर्षीय बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट श्रृंखला आरंभिक दिन का तीसरा मैच शुरू हो चुका है. इस बार लंबी हिट मारना चाहते, देखना पड़ेगा. गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा पार. 6 नवंबर देखिए मदन मड़केरी जो कि कर्नाटक के एक जानी मानी अंपायर है, अपने ही अंदाज में डांसिंग के रूप में यहाँ पर सारे दर्शक लोगों का और खिलाड़ियों का मनोरंजन देने में एक बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं. मदन मड़केरी जी कर्नाटक के एक बहुत ही जाने माने अंपायर में से एक हैं. जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली बोर्ड ने नाम कमा चुके, उसी तरीके से कर्नाटक में एक बहुत ही नामदार अंपायर हैं, स्टाइलिश अंपायर जो कि डांसिंग के रूप में जाने जाते हैं. सारे मैदान के अंदर खिलाड़ियों को और दर्शक लोगों को उत्साह दिलाते हैं और उनको उत्तेजना करते हैं. इस बार हवा में गेंद देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पर 6 रन होगा या कैच होगा. जी हाँ, लांगाने की दिशा में बहुत ही खूबसूरत कैच, एक बड़ी मछली जाल में. दुर्गा प्रसाद जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे गेंदबाजों के खिलाफ, इस बार सुजीत ने दुर्गा प्रसाद को पेविलियन की राह दिखाते हुए क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर सुजीत. डिजाइन आर के आन बान शान दुर्गा प्रसाद का विकेट खो दिया है. टीम का कुल स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि इमारत जैसा लक्ष्य को खड़ा कर दिया है BCON के बल्लेबाजों ने. अगर BCON की टीम में जो बल्लेबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है. जैसा कि युवराज मोहन 16 गेंद पर 35 रन बनाकर एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था. 2 चौके 2 छक्के उसमें शामिल थे. उसके बाद विघ्नेश ने 7 गेंद पर 11 रन, बहुत ही अच्छी गेंद. यहाँ पर जो कि बड़ा रन लेना चाह रहे थे, यहाँ पर लेते हुए अगर डायरेक्ट हिट लगती तो खतरा हो सकता था. बाल बाल बचे बल्लेबाज. उसके बाद तिरुचंगू ने 41 रन बनाए थे 21 गेंद पर, 4 चौके 2 छक्कों की सहायता से. उसके बाद महेंद्रन जो कि 3 गेंद पर 18 रन 3 छक्के शामिल थे. अंतिम 3 गेंद पर हैट्रिक सिक्सर लगाकर अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था महेंद्र ने. जी हाँ, मैच की ओर बढ़ते हैं. फिलहाल यहाँ पर टीम का कुल स्कोर हो चुका है 16 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर. देखिए, लक्ष्य इतना आसान नहीं है. इमारत जैसा लक्ष्य को पीछा करना होगा. डिजाइन आर्क अगर इस मैच को जीतना होगा तो हर गेंद पर गेंदबाज के खिलाफ दहाड़ना होगा, खूनखार तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, तभी कुछ हो सकता है. नहीं तो निश्चित रूप से जो अभी भी BCON का पल्ला भारी है. अगर मैच को डिजाइन आर्क जीतना होगा तो यहाँ से लगातार बल्लेबाज गेंदबाज के खिलाफ
एक जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, हर गेंद पर दहाड़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। फिलहाल टीम का कुल स्कोर 3 ओवर की समाप्ति बाद केवल 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंजुंडा स्ट्राइक पर हैं, क्षमा करें लिखित स्ट्राइक पर हैं, जी हाँ, और वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। श्रीधर गौड़ा जो कि गेंदबाजी संभालते हुए, जो हिस्सा के धीमी गति से गेंद को डाल रहे हैं श्रीधर गौड़ा, और फुल टॉस गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज लिखित दिखने में एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखने में नजर आ रहे हैं। क्या यहां पर चौके छक्के लगा पाएंगे, फिलहाल देखना पड़ेगा। उनकी बॉडी भी बहुत ही एक संतुलित बॉडी है, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बहुत ही खूबसूरत कीपिंग का मुजाहरा करते हुए, जिस तरीके से हमारे भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चुस्ती पुस्ती के साथ कीपिंग करते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो कीपर की किरदार निभा रहे हैं युवराज। जी हाँ, आप देख सकते हैं, लाइव में रिप्ले में देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से उस गेंद को तुरंत अपने झोली में डाला था, उसके बाद स्टंप आउट के लिए अपील की थी, लेकिन अंपायर ने मुस्कुरा कर नॉट आउट करार दी। तो इस बार देखिए लंबी हिट मारना चाहते थे, बल्ले का सही संपर्क नहीं, फिर से कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। टीम का कुल स्कोर केवल 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शॉट गेंद फिर से लाभ नहीं उठा पाए लिखित। ಹಲೋ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೈರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು। फायर फ्लिंग वर्सेस टीवीएस, ಎರಡು ತಂಡದ कैप्टन दोनों टीमों के कप्तान से मैं निवेदन कर रहा हूं, फायर फ्लिंग्स और टीवीएस के कप्तान से जल्द मंच की ओर आ जाए, टास होने वाला है, प्लीज कृपया जल्द से जल्द आ जाए। टीम का कुल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेम, डॉट बॉल। जी हाँ, अगले मैच के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक प्रेसिडेंट हैं हमारे विनायक जी, जो अगले कार्यक्रम में जो टॉस कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, बहुत ही खूबसूरत शॉट गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन डीप, लेकिन उनका बल्ला नहीं चल रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है डिजाइन आर के लिए। क्या लिखित यहां पर लंबे हिट लगा पाएंगे, लंबी हिट लगा पाएंगे, देखना पड़ेगा। 8 गेंद पर मात्र 1 रन सिर्फ बनाए हैं। दूसरी बार देखिए लिखित, इस बार मेरे ख्याल से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 6 रन। जी हां, इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो लिखित कुछ हो सकता है। 8 गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर खेल रहे थे, उसके बाद मैंने कहा था लिखित अगर मैच को यहां पर जीतना होगा तो चौके छक्के लगाना होगा, तो उसके बाद एक बल्ला घुमाया था लॉन्ग रन की दिशा में, काबिले तारीफ था। तीसरी बार महेंद्रन तैयार होते हुए लिखित स्ट्राइक पर है। इस बार फिर से लंबी मारना चाहते थे, बल्ले का सही संपर्क नहीं, आउट एरेट जोता हुआ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
इस एक रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर मात्र 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चाहिए 79 रन 15 गेंद पर। फिर से महेंद्रन तैयार होते हुए, बहुत ही शॉर्ट गेंद थी, यहां पर तालमेल नहीं था लिखित और वेलू के बीच। इस वजह पर, इस बिना पर लिखित का विकेट खो दिया है रनआउट के रूप में। देखिए, मैं इससे पहले कह रहा था कि तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। अगर बल्लेबाज हो या फील्डर हो, अगर फील्डिंग में तालमेल नहीं होगा तो क्या छूट सकती है। अगर बल्लेबाज रन लेने की कोशिश में अगर तालमेल नहीं रहा, हाँ ना के कोशिश में अगर आप तालमेल यहां पर नहीं होगा तो निश्चित रूप से रनआउट के रूप में विकेट खो सकते हैं। इसी तरीके के प्रयास में लिखित अपना बहुमूल्य विकेट खो दिया है। और एक झटका डिजाइन आर के लिए, चौथा झटका। जी हां, 14 गेंद पर 79 रन चाहिए। नए बल्लेबाज गिरीश जो कि नॉन स्ट्राइक पर हैं। शॉर्ट गेंद हवा में गेंद है, लॉन्ग रन की दिशा में गेंद जाती हुई, नो मैंस लैंड होती हुई मात्र 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर केवल 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चाहिए 78 रन मात्र 13 गेंदों पर। देखिए, रिक्वायर्ड रन रेट जो है मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि 36 रन चाहिए प्रति ओवर, यानी हर गेंद पर 6 रन मारना है, 6 रन बटोरना है, तभी कुछ हो सकना है। तो मुश्किल है, लेकिन यहां पर मैथ हाथ से निकल गई है डिजाइनर के लिए। मैच यहां पर हाथ से निकल चुकी है। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंद पर 78 रन चाहिए। 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 78 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ। ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 77 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ। 5 ಓಟದ ಅಂತರಿಂದ ಬೈಕಾನ್ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಕಾನ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 78 ಓಟವನ್ನ ಸದ್ಯ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ಕ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ 78। ಯುವರಾಜ್ ಎಸ್ಕಾರ್ के लिए ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। 11ಕ್ಕೆ 78 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ಕೆ। ವೇಲು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾರ್ के लिए ಯುವರಾಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಯೋಕಾನ್। 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟವನ್ನು ಯುವರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು। 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಸ್ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ। 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ।
the fire spring smashers. नयन गढ़ी के आसपास बोला है. करता हूँ बाद में. The next match has begun between TVS versus FS. The score is on 7 after loss of 1 wicket. We are in the second over and TVS is on 7 for 1. Nitish is the bowler. Cracking shot this time. Ball is in the air and ball racing towards the boundary line. 4 runs. The fielder couldn't just cut off. Ball went to the boundary line and 4 runs came on that occasion for TVS. The score gets into double figures, 11 for the loss of 1 wicket. We are still in the second over. 3 balls remaining from the over. Played on the onside and played to fine leg. Might get runs on that occasion. May get double. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್
The match between TVS Motors versus Fire Link Smashers. Fire Link Smashers won the toss, opted to field, and after 2 overs, the score is on 18 for the loss of 1 wicket for TVS Motors. TVS Motors, 18 for 1. We are getting into the third over. Kaushik is the new bowler. Thirumal is the batter, batting on 5. Abhi batting on 11. Dot ball on that occasion from Kaushik. He starts off with the dot ball for the fresh over. And single came on that occasion for Thirumal. He moves on to 6 and the score moves on to 19 after 2.2 for TVS Motors. Played on the back foot, missed by the fielder at point, ball went to deep point region and single taken on that occasion. Easily runs taken. Score moves on to 20. This time tried to go for a pull shot. Ball to the bottom edge and got runs on that occasion. Single taken, 21 on the board for TVS Motors. In the air this time, we'll have to wait and see, and that catch is taken. Wicket down here for TVS Motors. (21 for 2). After 2.5 overs, the bowler gets into the wicket. हवाईजा करके लिखा है हवाईजा सामने ही नहीं बड़ा है हवाईजा करके लिखा है
Finishes the over. After 3 overs, the score is on 22 for 2. Thirumal batting on 7, Vivek batting on 1. That 1 wicket has slightly reduced on the scoring rate for TVS Motors. Great job by Firelings. Pramod Raj is the new bowler. Will start the proceeding for the next over. Will be bowling around the wicket. Pramod Raj to Vivek. 22 for 2 after 3 overs. Projected score as of now 59 as per the current scoring rate. But as we always mention, cricket is a game of uncertainties and you never know what's going to happen next. We might see the double of runs, what we are seeing right now as a projected score. Tried to go for the play down back foot on the cut shot. Totally missed out on timing. The lack of footwork didn't allow batter to reach to the ball and ended up giving a dot ball on the occasion. Already down. Tried to go for a pull shot and one more dot ball. So Firelings, they are trying to keep control over this scoring rate for TVS Motors. They have already restricted them for 22 for 2 in just 3.2 overs. That's nicely placed onto the back foot, straight to fielder. Yet another dot ball. This time it goes on to the onside and taken a single easily by the batter Vivek. The score moved to 23 for 2. "25 runs on the board for the loss of 2 wickets after 4 overs for TVS Motors." So the current run rate is just about 6 runs per over for TVS Motors. The projected score somewhere around 52-53 as the match progresses, as we will see. But the current as for the current scoring rate, the score will be somewhere around 54-55. That is what the projected score is. Thirumal batting on 8, and a lot of discussion after that for the drinks break.
येलो चेक। फाइव फ्लिंग स्मैशर्स का कुल स्कोर 10 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए। राकेश चंद स्ट्राइक पर हैं, सागर गायकवाड़ नॉन स्ट्राइक पर एंड पे। छत्तीस गेंदों में चाहिए 25 रन। नो गेंदबाज अभी। बहुत ही अच्छी गेंद, बोल्ड। पहला झटका फायर फ्लिंग स्मैशर्स के लिए। पैंतीस गेंद पर 25 रन चाहिए। हर गेंद पर एक एक रन लेंगे तो निश्चित रूप से आसान तरीके से मैच को जीत हासिल कर सकती है फायर फ्लिंग स्मैशर्स। टॉस जीतकर फायर फ्लिंग स्मैशर्स ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, जो कि टीम के कप्तान ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेके बांध कर रखा था बल्लेबाजों को। सिर्फ 25 रन चाहिए 35 गेंद पर। बहुत ही अच्छी गेंद, जोगिंदर बड़ा रन लेते हुए यहाँ पर अच्छी रनिंग विकेट देखने को मिलता हुआ। दोनों बल्लेबाज के बीच अच्छी तालमेल। एक रन से संतोष होना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर 11 रन। देखिए फायर फ्लिंग स्मैशर्स के लिए सिर्फ 24 रन चाहिए, लेकिन जोखिम भरा रन का कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अगर आप विकेट खोते रहेंगे तो निश्चित रूप से दबाव होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत शॉट, डीप एक्स्ट्रा की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रन। वहां पर देखिए कर्नाटक के जाने माने अंपायर मदन मड़केरी अपने अंदाज में डांसिंग करते हुए, डांसिंग अंपायर कहा जाता है कर्नाटक में, एक बहुत ही अच्छे मशहूर अंपायर हैं। जितनी भी तारीफ कीजिए मदन मड़केरी को उतना कम है। कर्नाटक के हर जिला में जाते हैं मदन मड़केरी, उनका एक फैन फॉलोअर्स है। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग में अपना जलवा दिखाते हुए मदन मड़केरी। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, क्लीन बॉल, दूसरा विकेट का पतन। फायर फ्लिंग स्मैशर्स का दूसरा झटका। और इस क्रिकेट श्रृंखला प्रारंभ होने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया एसआरआर लैंड डेवलपर्स के जो मुखिया हैं, उनको हम इस क्रिकेट श्रृंखला की ओर से बहुत ही धन्यवाद समर्पित करना चाहेंगे उस संस्था को, क्योंकि लेकर इस क्रिकेट श्रृंखला में भाग लिए। उनका भी एक बहुत ही बड़ा योगदान है। एसआरआर लैंड डेवलपर्स और एसआरआर गृहकल्पा। जी हाँ, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना आसान है, जो कि क्रिकेट श्रृंखला चलाने में बहुत ही मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आसान में तब्दील करने का नाम एसआरआर है। साथ ही साथ मेरे दोस्त, चहीते दोस्त, जिस तरीके से मैं उनको जितना भी तारीफ करूं उतना कम है। कर्नाटक स्टेट के टेनिस बॉल में अपना ही नाम बनाने वाला जो बंदरघट्टा रोड का एक मेरा चहीता दोस्त है विनायक। जी हाँ, एक ऐसा बल्लेबाज है विनायक जो ऑपोजिशन टीम के कोई भी गेंदबाज हो उनके खिलाफ खूंखार तरीके से, धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी करने का एक बल्लेबाज था। लेकिन फिलहाल अभी क्रिकेट श्रृंखला चलाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर क्रिकेट श्रृंखला से थोड़ा दूर होते हुए, लेकिन यहाँ पर श्रृंखला आयोजित करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद खेल दिया था, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर जोखिम भरा शॉट का कोई आवश्यकता नहीं है। फायर फ्लिंग स्मैशर्स के लिए हर गेंद पर 1-1 रन लेंगे तो निश्चित रूप से आसान तरीके से मैच को जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही कम लक्ष्य है। 19 रन चाहिए 31 गेंद पर।
31ಕ್ಕೆ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ बारी। अभी की ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया था, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे, जोखिम भरा रन लेते हुए बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तालमेल बहुत ही बढ़िया है इन दोनों बल्लेबाज के बीच, एक तरफ चंदू तो दूसरी तरफ कौशिक। जी हाँ, तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर आप तालमेल खो देंगे तो निश्चित रूप से रनआउट की एक चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को तारीफ करना हो, चंदू और कौशिक को, क्योंकि तालमेल अच्छी है इन दोनों बल्लेबाज के। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर चाहिए, 30 गेंद पर 17 रन। नेक्स्ट बॉलर दिनेश स्ट्राइक पर हैं कौशिक। क्या यहां पर विकेट लेंगे दिनेश, देखना पड़ेगा। अगर लगातार विकेट और लगातार डॉट बॉल करेंगे तो तभी कुछ हो सकता है। ओह माय गॉडनेस, क्या गेंद है। देखिए यहां पर लंबी पिच मारने की कोई आवश्यकता नहीं है फायर फ्लिंग स्मैशर्स के लिए, थोड़ा सा हौसला रखना होगा। देखिए फिर से लंबी पिच मारना, इस बार मिडिल की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन लिए, दूसरा रन लेना चाहते थे। बहुत ही अच्छी रनिंग विकेट, 2 रन कुल स्कोर, 20 रन 2 विकेट के नुकसान। चाह रहे हैं क्योंकि 28 गेंद पर फुल टॉस के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया था लॉन्ग रन की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 27 गेंद पर मात्र 14 रन चाहिए। जीत की ओर बढ़ती हुई फायर फ्लिंग स्मैशर, जितनी भी तारीफ की जाए फायर फ्लिंग स्मैशर्स के कप्तान को उतना कम है, क्योंकि टॉस जीतकर एक निर्णय जो लेते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्रिकेट जो एक गेम में। इस बार देखिए क्या सूझबूझ के साथ चंदू ने खेला था उससे गेंद को, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया था। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 26 गेंद पर 13 रन चाहिए। 5वीं बार फिर से कौशिक, इस बार फिर से लंबी हिट मारना चाहते थे, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंतिम 1 गेंद बाकी है चौथे ओवर समाप्ति के लिए। टीम का कुल स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिनेश अंतिम के लिए जीत हासिल करने के लिए मात्र 12 रन चाहिए। फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया था और लॉन्ग के दरमियान फील्डर वहां पर मौजूद है। 2 रन लेने से संतुष्ट बल्लेबाज, तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया कौशिक। चौथे समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತ 25 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 24ಕ್ಕೆ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೈರ್ ಫ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಟ್ಟು 75 दर्शक लोगों की जो 1 मिनट पर 150 दिल की धड़कनें मार रही है, तो यहाँ पर हो सकता है अगर कोई जो दिल वाले हैं इससे मैच का मजा ना ले। 8 पर 5 रन चाहिए। 6 विकेट को किया है यहाँ पर फायर फ्लिंग स्मैशर्स ने रनआउट के रूप में। और माय गुडनेस गेंद है, सूझबूझ के बाद यहाँ पर गेंदबाजी को संभाल रहे हैं। जो आसान तरीके से मैच को करने की अंतिम समय पर बल्लेबाज सूझबूझ के
बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद यार कर थी, हल्के हाथों से खेल दिया था, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन ले सकते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर यहाँ पर सही समय पर यहाँ पर गेंद को वापसी कर सकते तो निश्चित रूप से रनआउट का एक अवसर हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब। 6 गेंद पर 3 रन चाहिए। अगर आखिरी गेंद डॉट बॉल होता तो निश्चित रूप से 6 गेंद पर 5 रन बटोरना का फायर फ्लिंग स्मैश के बल्लेबाज क्या वापसी कर सकती है। टीवीएस टीम के गेंदबाज देखना पड़ेगा। अंतिम 6 गेंद पर 3 रन चाहिए। एक समय ऐसा था 24 गेंद पर 10 रन, अभी 6 गेंद पर 3 रन चाहिए, यानी 18 गेंद पर 7 रन देकर अपना बहुत ही एक बड़ा योगदान दिया यहाँ पर गेंदबाजों ने। टीवीएस के गेंदबाजों ने क्या कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 गेंद पर 3 रन बटोरना होगा फायर फ्लिंग स्मैशर के लिए। निश्चित रूप से इससे पहले मैं कहा था अगर मैच को यहां पर जीत हासिल कर लेगी तो टीवीएस इतिहास रच देगी इस मैदान पर। 3 रन चाहिए 6 गेंद पर। सागर के खंभों पर एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दिया है टीम के कप्तान ने। क्या कप्तान का एक भरोसा यहां पर बरकरार रखेंगे, देखना पड़ेगा। क्या उनका दिल जीतेंगे कप्तान का, फिलहाल देखना पड़ेगा। 6 गेंद पर 3 रन चाहिए। यहां पर दर्शक लोगों को दिल की धड़कनें तेज होती हुई। स्ट्राइक पर हैं चंदू, नॉन स्ट्राइक पर अंकित कुमार मिश्रा। देखिए दोनों टीमों के एक टीम में एक खामोशी छाई हुई। इस बार लंबी मारना चाहते थे, हवा में गेंद देखना पड़ेगा क्या क्या छोड़ सकते जी नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने में कामयाब। मैच यहां पर तय हो चुकी है। 1 रन चाहिए। थोड़ा सा लंबी सांस लेते हुए फायर फ्लिंग स्मैशर्स के कप्तान, क्योंकि एक समय ऐसा था कि आसान तरीके से मैच को जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो अभी और साथ ही गेंदबाज ने साथ दिया था वो काबिले तारीफ था। 5 गेंद पर 1 रन चाहिए। फिर से सागर यार कर लूंगा, डिलीवरी थी, यहां पर रनआउट का एक अवसर था, कोई खतरा नहीं है। 4 गेंद पर मात्र 1 रन चाहिए। मैच यहां पर तय हो चुकी है, मात्र 1 रन चाहिए जीत हासिल के लिए फायर फ्लिंग स्मैशर्स के लिए। 4 गेंद पर 1 रन। फिर से सागर तीसरी बार, और बहुत ही अच्छी गेंद, लंबी मारना चाहते थे, बाल बाल बचे बल्लेबाज। बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा, अगर लगता तो निश्चित रूप से कैच हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 1 रन चाहिए चौथी बार। बहुत ही खूब शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में जाते हुए 4 रन। फायर फ्लिंग स्मैशर अंतिम समय पर जीत हासिल कर चुके हैं। उस टीम को हम अभिनंदन करना चाहेंगे। अगला मैच कुछ ही पल में शुरू होने वाला है। अगले का आंखों का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर रवि जी। धन्यवाद।
हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 ದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಆಪ್ಟಿವ್ ವಾಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಪ್ರೋ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಪ್ಟಿವ್ ವಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಚಾಂಪ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ತಂದ ಆಪ್ಟಿವ್ ವಾಕರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಚಾಂಪ್ಸ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಥಾಮಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ. रन की कोई गुंजाइश नहीं थी. रन लेना चाहते थे, मिड ऑफ पे वहां पर फील्डर मौजूद थे. रन लेने की एक प्रयास में दुर्भाग्य तरीके से दिनेश थॉमस अपना विकेट खो दिया है. क्या फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं यहां पर विप्रो चैंप्स के फील्डर्स. 5 रन पर 2 विकेट खो दिया है ऑप्टिव वॉकर्स ने. नए बल्लेबाज कार्तिक की एंट्री हो चुकी है. क्या यहां पर कार्तिक और नवीन गौड़ा लंबी पारी खेल पाएंगे, देखना पड़ेगा. फिलहाल यहां पर सूझबूझ के साथ
खेलना होगा, लंबी पारी खेलेंगे, कुछ बिल्ड करना होगा, स्कोर को इमारत जैसा लक्ष्य को खड़ा करना होगा। तो दोनों बल्लेबाज तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना होगा, तभी कुछ हो सकता है ऑप्टिव रॉकर्स के लिए। विजय दूसरे ओवर के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, अंपायर के खिलाफ दबाव डालने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने मुस्कुराकर नॉट आउट करार देते हुए नजरअंदाज कर दिया उस अपील को। विजय और साथी खिलाड़ी अपील किए थे, दबाव डाल रहे थे अंपायर के खिलाफ, लेकिन अंपायर भी बहुत ही जाने माने अंपायर हैं, लेकिन उनका दबाव काम नहीं करा, क्योंकि एक बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। अभी तक उनके ऊपर ब्लॉक डॉट भी नहीं है, उतने अच्छे एक एक्सपीरियंस अंपायर्स हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए ऑप्टिव रॉकर्स के कप्तान यहां पर टॉस जीतकर मेरे ख्याल से निर्णय थोड़ा गलत लिए थे, क्योंकि बहुत सारे कप्तान जो हैं पहले टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का एक निर्णय लेते हैं, लेकिन यहां पर उनका डिसीजन थोड़ा रॉन्ग साबित हो रहा है। फिलहाल 5 रन पर 2 विकेट खो दिया ऑप्टिव रॉकर्स ने। तीसरी बार बहुत ही अच्छी शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, यहां पर फिर से जो किम्बर रन लेते थे। इस बार पूरा करके जब तक स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी बार फिर से विजय तैयार होते हुए पर है। हवा में गिरने के यहां पर खतरा हो सकता है, देखना पड़ेगा। फील्डर नीचे है, जी हां, बहुत ही खूबसूरत कैच, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में तीसरा विकेट का पतन, ऑप्टिव रॉकर्स का तीसरा झटका। क्या हो रहा है इस मैदान पर? जितनी भी तारीफ की जाए विप्रो चैंप्स को उतना कम है, क्योंकि विप्रो चैंप्स भी वही चाहते थे कि अगर वो टॉस भी जीते, मेरे ख्याल से फील्डिंग लेने का निर्णय लेते थे। यहां पर ऑप्टिव रॉकर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। थोड़ा मेरे ख्याल से गलत डिसीजन कह सकता हूं मैं, क्योंकि जो टीम का कप्तान फील्डिंग करने का निर्णय लेता है, तो लेकिन यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पारी संभालेंगे बल्लेबाज देखना पड़ेगा। फिलहाल तीसरा विकेट दिया है ऑप्टिव रॉकर्स ने इस मात्र 6 रन पर। 2 बाकी हैं, 2 ओवर समाप्ति के लिए टीम का कुल स्कोर 6 रन। दुर्गेश स्ट्राइकर हैं, कार्तिक और दुर्गेश लंबी पारी खेलना होगा अगर इमारत जैसा लक्ष्य को खड़ा करना होगा तो, क्योंकि इतना आसान तरीके से हारने वाली टीम में से नहीं है विप्रो चैंप्स। हवा में गेंद, क्या खतरा हो सकता है? शॉट मिड विकेट की दिशा में और एक विकेट का पतन, चौथा झटका ऑप्टिव रॉकर्स के लिए। वाह, क्या गेंदबाजी कर रहा है विजय। जिस तरीके से उनका नाम है उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए विजय प्राप्त करते हुए फिलहाल 5 गेंद पर 1 रन देकर 2 विकेट लेने में कामयाब होते हुए 6 रन पर 4 विकेट को दिया है ऑप्टिव रॉकर्स ने। और ಓಟಗಳಿಗೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಕರ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. किरण फिलहाल एंट्री ले चुके हैं. थोड़ा बातचीत करते हुए किरण और कार्तिक ये दोनों थोड़ा करना होगा अगर एक अच्छा स्कोर लेने के लिए. की दिशा में बल्लेबाजों के ओवर की 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन के नुकसान पर ಎಂಬೂರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ 36 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ
ದಾಂಡಿಗರು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ 8 ಓವರ್ 55-60 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ. शिवारी फिर से पहले ओवर पे 5 देकर 1 विकेट अपने खाते में लिए थे, लेकिन इस अपने वैयक्तिक दूसरे ओवर में कितने रन देकर कितने विकेट लेना पड़ेगा. शिवारेड्डी दूसरी बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया था. 1 रन लेने में कामयाब. टीम का 7 रन 4 विकेट के खेल दिया था. वाइड लॉन्ग में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम का कुल स्कोर. बहुत ही अच्छी गेंद. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. अंतिम 2 गेंद बाकी है तीसरे ओवर समाप्ति के लिए. बहुत ही अच्छी गेंद. कवर की दिशा में गुंजाइश. टीम का कुल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर. इसे हल्के हाथों से खेल दिया था. मिडान की दिशा में गेंद जाती हुई मात्र 1 रन मिलेगा. 3 और 4 विकेट के नुकसान पर. After completion 3 over, score moves on to 9 run loss of 4 important wickets. बहुत ही बढ़िया शॉट. गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन. फील्डर वहां पर चूंकि उस गेंद को रोकने में खराब फील्डिंग. टीम का कुल स्कोर 13 रन. बहुत ही अच्छी गेंद. कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई. चौथी बार
बहुत ही अच्छी गेंद यार कर लेंगे, डिलीवरी थी यहां पर जोखिम भरा रन लेते हुए रन आउट के लिए मांग की है वहां पर फील्डर ने, लेकिन अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगते हुए किस तरीके का डिसीजन आएगा देखना पड़ेगा। क्या यहां पर खतरा हो सकता है बल्लेबाज के लिए, देखना पड़ेगा। एक तालमेल अच्छा था लेकिन जोखिम भरा रन लिए थे वहां पर बल्लेबाज। फिलहाल यहां पर तीसरे अंपायर देख रहे हैं क्या यहां पर आउट है या नहीं है। तीसरे अंपायर यहां पर देख रहे हैं। अंपायर का तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, नॉट आउट करार देते हुए बाल बाल बचे यहां पर बल्लेबाज। टीम का कुल स्कोर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवीं बार किरण स्ट्राइक पर है। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से अपील किए थे वहां पर फील्डर्स ने, लेकिन अंपायर ने फिर भी तुरंत मना कर दिया, उस अपील को नजरअंदाज कर दिया अंपायर ने। टीम का कुल स्कोर 14 रन पर 4 विकेट खो दिया है ऑफ टीम वर्कर्स ने। आखिरी बार कार्तिक तैयार होते हुए स्ट्राइक पर है किरण। कार्तिक की ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगातार शॉर्ट टर्नमैन की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ऑप्टिव रॉकर्स का स्कोर 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। अंतिम 24 गेंद बाकी हैं, कितने रन बटोर पाएंगे ऑप्टिव रॉकर्स से देखना पड़ेगा। अगर 24 गेंदों पर 24 रन भी बनाएंगे तो निश्चित रूप से 39 रन होगा, 40 रन का लक्ष्य होगा। अगर 24 गेंद पर आप 40 रन बटोरेंगे तो 55 रन होगा, 56 रन का लक्ष्य होगा। फिलहाल कितने रन बटोर पाएंगे फिलहाल देखना पड़ेगा। नारायण नए गेंदबाज, जी हाँ उनका नाम है वेंकट नारायण, उनको शॉर्टकट से नारायण कहते हैं, नारी कहते हैं, नारायण वेंकटगिरी। 5 ओवर के लिए किरण स्ट्राइक पर हैं। शॉट भी थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया था उसको डीप थर्ड मैन और कवर्स के दरमियान 2 रन लेने में कामयाब। इससे 2 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी हमें गेंद लॉन्ग ऑफ दिशा में, बहुत ही खूबसूरत। क्या 5वां झटका ऑप्टिव रॉकर्स के लिए, आप रिप्ले में देख सकते हैं क्या जबरदस्त कैच को अपने झोले में डाले है फील्डर ने।
5 विकेट का नुकसान हो चुका है ऑप्टी रॉकर्स के लिए। पहले टॉस जीतकर ऑप्टी रॉकर्स के कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन उनका निर्णय यहां पर थोड़ा डिसीजन उनका मेरे ख्याल से गलत लग रहा है, क्योंकि टॉस जीतकर अगर पहले आप फील्डिंग लेते तो कुछ हो सकता था, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी लेकर थोड़ा सा पश्चाताप कर रहे हैं ऑप्टी रॉकर्स के कप्तान। 17 रन पर 5 विकेट खो दिया है ऑप्टी रॉकर्स ने, जो कि नए बल्लेबाज जगन जिम्मेदारी संभालने के लिए आ चुके हैं मैदान पर। नारायण वेंकटगिरी एक पहले ही अपने ओवर में पहला विकेट लेने में कामयाब रहे, सफल रहे। जगन और कार्तिक एक लंबी पारी खेलना होगा, क्योंकि इनिंग समाप्ति के लिए अभी भी 22 गेंद बाकी हैं। टीम का कुल स्कोर केवल 17 रन, 5 विकेट खो दिया है। बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर फिर से जोखिम भरा रन लेते हुए डायरेक्ट हिट अगर लगता है तो खतरा हो सकता था। प्रयास किया था वहां पर नारायण वेंकटगिरी ने, लेकिन बाल बचे बल्लेबाज लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। फिर से नारायण वेंकटगिरी चौथी बार। कार्तिक स्ट्राइक पर है। हवा में गेंद है, फिर से खतरा हो सकता है। नारायण वेंकटगिरी को दूसरा विकेट और टीम का छठा विकेट का पतन, ऑप्टी रॉकर्स का छठा विकेट का पतन होता हुआ। कार्तिक का विकेट यहां पर पतन हो चुका है। टीम का कुल स्कोर 18 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज डेविड ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 18-6 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹುಸ್ಕೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ। SRR ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಾ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿನಾಯಕ್ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕರ ಹಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್। ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 18-6 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ। ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಲಂಬಿಗೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು। ಲಾಂಗಪ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗದ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಗನ್ ರವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರ। ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಜಗನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ। 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, इस कार के लिए स्ट्राइकर अली डेविड, नॉन स्ट्राइकर अली जगन। ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಒಂದು ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಆಪ್ಟಿ ರಾಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಪ್ರೋ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ 2ನೇ ಬಾರಿ, ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ।
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜಗನ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೇವಿಡ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟು ಜಗನ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನತ್ತ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2/6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಸುಂದರದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 1/6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन 6th ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 24, लॉस ऑफ 6 इंपॉर्टेंट विकेट. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಆಪ್ಟಿವ್ ರಾಕರ್ಸ್ ನ ದಾಂಡಿಗರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟ, ಲೆಗ್ ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನಡುವೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಕೂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಿರಣ್ ರವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೋತಾ ಕಿರಣ್ ರವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶತಮಾನದ ಹೊಡೆದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟ ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಸತ 7 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29 ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಿರಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 7th over score moves to 30, loss of 6 wicket. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स के आखिरी 6 गेंद बाकी हैं. 6 गेंद पर रन बटोर ऑप्टिव के बल्लेबाज देखना पड़ेगा. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಎಸ್ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 32 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಪ್ಟಿವ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಹಳ ಶತಮಾನದ ಹೊಡೆತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ್. ಬಹಳ ಶತಮಾನದ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ನಡುವೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಗನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ಗೆ 3ನೇ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ವಿಜಯ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟಗಿರಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 33 ಓಟಗಳು 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಟಿವ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ ಸಾಧನೆ ಆಡಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಶೂಟ ವಿನಾಯಕ್ ರವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯ ಸಮ್ಮುಖದ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಹಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ SRR ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, SRR ಗೃಹಕಲ್ಪ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಟಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 35-36 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ವಿಪ್ರೋ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ 35 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಪ್ರೋ ಚಾಂಪ್ಸ್. 48ಕ್ಕೆ 35 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ರವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
We are about to begin the second innings of the next match between Optic Rockers versus Vipro Champs. And Vipro Champs, they need just 35 runs to win in 8 overs. That is the equation right now for them. So we're about to begin the first ball of the second innings of the match between Optic Rockers versus Vipro Champs. And straight away runs on the board for Vipro. First ball, the boundary came on the occasion. What a start for Vipro Champs. Boundary on the very first ball. Shiva Reddy is the batter. With him, Chandu on our second end, and with the ball, E.B. Nisar. Oh, this time he goes big, Shiva Reddy. He goes big one. We'll have to wait for the signal from the umpire. Is it going to be a 6 or a boundary? The umpire still wants to check. He wants to give a check that what is the landing of the ball. 6 runs is what the umpire signals. 10 runs straight away on the board after 2 deliveries in the very first over. That's a cracking and smashing start for Vipro Champs. Came down the wicket, this time straight to fielder, no runs on the occasion, dot ball. In the air again, and this time the fielder takes the catch, and the batter, Shiva Reddy, after getting those boundaries and 6s, he is walking back to pavilion. He tried to go for one more big shot and ended up giving a catch. First wicket down for Vipro Champs on score of 10. 25 needed to win. This time a defensive shot. Dot ball again. After those 2 shot on the boundary and a 6er, wicket fall and a dot ball again. So 4 balls done, 10 runs on the board. 25 runs in 44 balls looks to be a very easy target. Pulled away this time. 2 fielders behind it, and we'll have to wait if the fielder can cut off. No. The ball has raced to boundary for 4 runs. Yet another boundary, so runs have come all in boundaries and 6s so far. 14 on the board for Vipro Champs, 21 more needed. Turning out to be a very expensive over this first one. After 1 over, the score is on 14 for 1 for Vipro Champs. 21 required, 42 balls remaining. The target looks very easy. Dharnesh opens his account with the boundary. Chandu yet to open his account, and he will be on the strike for the first time.
New ball we have Durgesh. We'll start the proceeding for the next over. On strike Chandu for the first time in this chase. Played on the back foot, straight to field at point. No runs on the occasion. On the board. First ball dot in the second over. Chandu on strike. Oh, Chandu goes big this time. Over square leg. Couple of bounces to the fielder at square leg. We'll have to wait. I think umpire wants to check where the ball landed before getting that ball back onto the ground. Umpire still checking. It looks to be only couple of runs. बाउंड्री चेक है क्या? दादा बाउंड्री चेक है? बाउंड्री चेक है? Boundary signal on the location. Boundary signal on the location from the umpire. The score has moved to 18 now. "17" is what they need to win. Chandu opens his account with the boundary as well. So 3 batters open their account with the boundary. This time on the offside. There is a protection, it seems. We'll have to wait and see. 4 more signal. Oh, what a boundary. These guys are dealing in boundaries at this moment. 22 on the board straight away for Vipro Champs. 13 more needed to win. They are making this target look so good and so easy for them. Single came on that occasion. 23 is the score for Vipro Champs. 12 required now to win, and on strike Darnish. Played out of the fine leg. No runs on that occasion. Dot ball. Plenty of balls remaining for Vipro Champs. They don't need to take any kind of risk. It's a quite easy looking target for Vipro Champs. 12 runs, 37 balls is what they need. They have made use of the power play so well that they have scored runs all in boundaries, and only couple of singles is what they have taken. Tried to go for a pull shot, loud appeal there, and given out. So second wicket down, Dharnesh out, caught behind. End of the second over, 23 for 2 for Vipro Champs, 12 required in 36 deliveries. That is the equation for
Vipro Champs, new batter Vijay will join in the middle. Very interesting. The all three batters, the two that got out and one on the non-strikers end, they all got open their account with the boundary. And Vijay is on the strikers end now, going to face his first delivery. Is he going to get his account open with the boundary? Sorry, he is going to be at the non-strikers end because wicket followed the last delivery of the previous over, so he will have to wait to open his account. On strike we have Chandu and Kiran is the new bowler. Vijay at the non-strikers end because wicket fall on the last ball of the previous over. 2 overs completed, 23 for 2, 12 required, 36 balls. Shrikant Reddy is the new bowler. We'll start the proceeding for the next over. Short pitch delivery, this time played to fine leg. Ball has raced to boundary, 4 runs. The boundaries are coming like just a festival for Vipro Champs. Just a firework that's coming out. 8 needed to win. The required runs are in single digit quickly. 27 on the board. Clean ball. What's happening in the middle there? These batters are getting into the boundaries and is losing a wicket on the other end. Third wicket down on the score of 27. It's like you hit the boundary and I take your wicket. That's the game right now going on between Vipro Champs versus Optive Rockers. They have a very low score put up on the board, but still they are fighting it out. The batter bowled round his legs on 27 for 3. Satish is the new batter and both the batters are absolutely new on the crease, yet to face a ball. 3 batters who came in as an top order, the opening pair back into the pavilion, 1 down player back into the pavilion. 3 wickets down for Vipro Champs, 27 for 3. Short pitch delivery played on the back foot. Single will for sure. They might look for 2 here. This field. 2 is a call and they will get 2 runs. Excellent running between the wicket. Great coordination between both the batters. Great response to each other and ended up getting 2 runs. 6 more required. 33 balls remaining. Defensive shot. And third umpire signal. Third umpire signal for run out. We will have to wait and see what the decision comes from the third umpire. (29 for 3) is the score on the board, and the Optive Rockers, they are expecting 1 more wicket here in the form of run out. This will boost, if this decision comes as out, the confidence of Optive Rockers will raise like anything. They can do the comeback in this match, even though only 6 runs are required to win. Because any new batter will have some pressure on him. Sometimes the low score match
will give you a different results. It may surprise you at different occasions. We have seen earlier. Out is the ball. So fourth wicket down for Vipro Champs. The batter will walk back to pavilion. Vijay will walk back to pavilion without troubling the scorers. Fourth wicket down for Vipro Champs on the score of 29. As I mentioned, that few more wickets and Opti Rockers will have a chance to come back into this match. New batter we have caught in ball. One more wicket. Fifth wicket down. What's happening in the middle? The required runs are 6 and the fifth wicket down for Vipro Champs. Even the captain of Vipro Champs may be surprised on the occasion that how his team is losing wickets on the other end. Vipro Champs, fifth wicket down on the score of 29. 3 overs completed, 6 required in 30 balls. They just need to push and run. That is what they need. They don't need to do any extra thing because they just need 6 runs to win. Underneath will be on the non-striker side because wicket again fall on the last ball of the previous over. Oh, nicely placed to square leg. There is a fielder at deep square leg, will get a single. Easy run for the batters. 5 required to win now. Again played to square leg. Will get single for sure. One more run added to tally. 4 required now to win. Four runs is just what they need to win. Vipro Champs. Down the leg side and ball, it seems to be just went past over the stump. There was no signal for the white from the umpire. So dot ball. Oh, nicely driven, but straight back to bowler. Dot ball again. The Vipro Champs just need 4 runs, but the optic rockers, they are not giving opportunity much. Optic rockers, they are not giving opportunity much to go for the big shots. They are trying to save singles. In the air, into the gap, yet another single. So 3 runs is what they need now. Last ball remaining from the 4th over, and 3 runs is what they need for the victory.
Down the leg side, this time wide for sure. Umpire having no hesitation there for stretching his arms. 2 required now. Can Vipro Champs finish this match in this over? Oh, goes for the big one. We'll have to wait and see. 4 runs came and that's a victory for Vipro Champs. They have won this match by 5 wickets. That's a victory for Vipro Champs and they move to the next round.
హలో 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 చెక్ హలో హలో చెక్ హలో హలో
ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಹಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ SRR ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀ ಗೃಹ ಕಲ್ಪಲೋತ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ BN ಕುಮಾರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಹಂಬಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ BN ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೇಔಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗೃಹ ಕಲ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ SRR ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಗೃಹ ಕಲ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಸುರಿ ಲೇಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ BN ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ BN ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್ ರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಹಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14 ಕೋಟಿಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರುತ್ವ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಮ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನೋಡುವ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಿತ್ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಮ್ಯಾಕ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. SRR ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ BN ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ದಿನದಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ SRR ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ? ಹೌದು, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23, 23. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. ಬಳಸುವುದು ಮರೆತು ಎಸೆತ ಔಟ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕು ಬೇಡ ನಡುವೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈಗ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 25 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 36 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ ತಂಡ दौर की समाप्ति के बाद 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स प्रोमैक कितने रन बटोर पाएंगे, कितना लक्ष्य देंगे नीलसन नाइट्स को देखना पड़ेगा। एक जबरदस्त क्रिकेट श्रृंखला जो कि पहला वर्षीय क्रिकेट श्रृंखला बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के रूप में प्रारंभ हो चुका है। पहला दिन का 6वां मैच शुरू हो चुका है। नीलसन नाइट्स के खिलाफ फ्रेंड्स प्रोमैक का एक महासंग्राम शुरू हो चुका है। अगले ओवर के लिए अक्षत भटनागर को बुलाया गया है। किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी संभालेंगे अक्षत भटनागर देखना पड़ेगा। शायद यहां पर 2-3 कदमों से गेंदबाजी करेंगे अक्षत भटनागर। स्ट्राइक पर है सृजन नायक और इस बार फुल टॉस गेंद थी, लंबी मारना चाहते थे, बल्ले का सही संपर्क नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अच्छी एक गेंदबाजी। दूसरी बार फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद है, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़ा सा लड़खड़ा है। मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट। टीम का कुल स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के अंतिम में 4 गेंद बाकी हैं। सृजन नायक यहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं क्योंकि 1 विकेट खो दिया है फ्रेंड्स प्रोमैक ने। 3 गेंद पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, 1 चौके की सहायता से। उस तरफ शमन शेट्टी जो कि 6 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 चौके की सहायता से। तीसरी बार अक्षत भटनागर। बहुत ही अच्छी शॉट, इस बार स्कोर लगा और फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन में पूरा कर चुके, दूसरा रन लेना चाहते थे। बहुत ही अच्छी रनिंग टीम विकेट। 2 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 31 रन पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। सृजन नायक स्ट्राइक पर मौजूद है। फिर से अक्षत भटनागर चौथी बार और बहुत ही अच्छी गेंद, हाफ ब्रेक डिलीवरी थी, गेंद अंदर की ओर मुड़ी थी। गेंद को घुमा रहे यहां पर अक्षत भटनागर, उस गेंद को परख नहीं पाए बल्लेबाज सृजन नायक। कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई 5वीं बार अक्षत भटनागर। और फिर से कट मारना चाहते थे, बाल बचे यहां पर सृजन नायक। जितनी भी तारीफ की जाए अक्षत भटनागर की उतना कम है। कितनी
एक जबरदस्त तरीके से यहां पर कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को घुमा रहे हैं, ऑफ ब्रेक का गेंद है, इस बार ऑफ ब्रेक गेंद, हवा में गेंद है, बाल बाल बचे यहां पर सृजन नायक, डीप थर्डमैन की दिशा में गेंद जाती हुई 2 रन लेने में कामयाब। इस 2 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स प्रोमैक का कुल स्कोर। अंतिम 30 गेंद बचे हुए हैं, 30 गेंद पर कितने रन बटोर पाएंगे फ्रेंड्स प्रोमैक को देखना पड़ेगा। फिलहाल स्ट्राइक पर है शमन शेट्टी, नॉन स्ट्राइक पर है सृजन नायक। फिलहाल यहां पर किस गेंदबाज को जिम्मेदारी देंगे देखना पड़ेगा। निल्सन नाइट्स के कप्तान जी हां, अंकुश को जिम्मेदारी दी गई है। शमन शेट्टी क्षमा करें स्ट्राइक पर हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस बार देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। टीम का कुल स्कोर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शमन शेट्टी यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 7 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं, 4 चौके की सहायता से। उनका स्ट्राइक रेट है निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया, 257.14। और माय गुडनेस, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद थी, स्लोवर फुल टॉस थी, उस गेंद को परखने पर यहां पर रिस्की सिंगल और जोखिम भरा रन लेते हुए बहुत ही अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट। अच्छी तालमेल थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, शमन शेट्टी और सृजन नायक के बीच। 2 रन लेने में कामयाबी से 2 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से कुश तैयार होते हुए तीसरी बार फुलटॉस गेंद की खतरा हो सकता है, देखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया कैच, लंबे कद के खिलाड़ी, ऐसा लग रहा कि वहां पर कर्टली आम्ब्रोस फील्डिंग कर रहे थे, क्योंकि एक 7 अड़ी के एक फील्डर थे। निश्चित रूप से अगर से छोटे कद के खिलाड़ी रहते तो 6 रन होने की संभावना थी, इसमें कोई अनुमान नहीं है। शमन शेट्टी का विकेट खो दिया है फ्रेंड्स प्रोमैक की टीम। 2 विकेट का पतन हो चुका है 39 रन पर। आप रिप्ले में देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से कैच को अपने झोली में डाल लिया है फील्डर रोहित ने। आप रिप्ले में देख सकते हो, क्योंकि मैं इससे पहले कहा था अगर छोटे कद का खिलाड़ी अगर वहां पर फील्डिंग मौजूद रहते तो वो कैच लेना मुश्किल था, लेकिन वहां पर लंबे कद के खिलाड़ी, मेरे ख्याल से 7 अड़ी का खिलाड़ी था। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि कर्टली आम्ब्रोस जिस तरीके से हाइट है उसी तरीके से यहां पर फील्डर रोहित दिख रहे हैं, दूर से नजर आ रहे हैं। और यहां पर स्विच करने की कोशिश, उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, बल्ले का सही संपर्क नहीं, कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई 39 रन पर 2 विकेट खो दिया है फ्रेंड्स प्रोमैक ने। अंतिम 2 गेंद बाकी, चौथे ओवर समाप्ति के लिए 5वीं बार अंकुश तैयार होते हुए। शॉर्ट गेंद थी, बहुत ही बढ़िया कैच, कीपर ने कोई गलती नहीं करे। यहां पर धीरज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैच को झोली में डाल लिया है। कट करना चाहते थे, छेड़खानी करने की कोशिश की, थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ की ओर गेंद जा रही थी, उस गेंद को छेड़खानी करना चाह रहे थे बल्लेबाज प्रताप गौड़ा, लेकिन वहां पर धीरज ने क्या लाजवाब कैच को अपने झोली में डाल लिया है। और एक विकेट का पतन फ्रेंड्स प्रोमैक की ओर से। तीसरा झटका फ्रेंड्स प्रोमैक के लिए, 39 पर 3 विकेट का पतन हो चुका है। अंतिम 1 गेंद बाकी है चौथे ओवर समाप्ति के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद,
रन की कोई गुंजाइश नहीं है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज रोहित, सीबीआर हसन, शेखर नॉन स्ट्राइक पर है, सृजन नायक स्ट्राइक पर है, रोहित मैत्री गेंदबाजी संभालते हुए। रोहित मैत्री की गेंद बहुत ही खराब गेंद, शॉर्ट गेंद थी, उस गेंद को खेल दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद जाती हुई 4 रन। टीम का कुल स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना पड़ेगा, गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा पार, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, नजाकत भरा शॉट, ताकत वाला शॉट था ये। इस 4 रन की सहायता से फ्रेंड्स प्रोमैक का कुल स्कोर हो चुका है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सृजन नायक स्ट्राइक पर मौजूद है, 9 गेंद पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं 3 चौके की सहायता से। तो उधर सीबीआर रसान शेखर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। फिर से रोहित मैत्री, फिर से शॉर्ट गेंद हल्के हाथों से खेल दिया था, उधर मिड विकेट की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन पूरा कर चुके हैं। दूसरा रन जो कि बड़ा रन लेते हुए थोड़ा सा खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा, सिर्फ 1 रन की गुंजाइश थी, लेकिन फील्डर की गलती की बिना पर और एक अतिरिक्त रन दे बैठे। टीम का कुल स्कोर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खराब गेंद, लेकिन वहां पर शॉर्ट फैलने की दिशा में फील्डर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत कैच अर्जुन द्वारा, शॉर्ट गेंद थी, उस गेंद को पुल करना चाह रहे थे, फैलने की दिशा में वहां पर अर्जुन मौजूद थे। उस गेंद को लंबी हिट मारने में नाकाम रहे बल्लेबाज सृजन नायक, जो कि एक गेंदबाज के खिलाफ महंगे साबित हो रहे थे, हर मैदान की दिशा में चौके लगा रहे थे। फिलहाल सृजन नायक का विकेट खो दिया है फ्रेंड्स ऑफ प्रोमैक। नए बल्लेबाज संजय श्रीकांत स्ट्राइक पर मौजूद है। 5 ओवर के अंतिम 2 गेंद बाकी हैं। टीम का कुल स्कोर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ता हुआ। टीम का कुल स्कोर 50 रन, हाफ सेंचुरी, 50 रन पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स प्रोमैक के। 5वीं बार बहुत ही अच्छी गेंद खेल दिया था, उसको मिड विकेट की दिशा में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर सीबीआर रसन शेखर ने मना कर दिया, तुरंत ना कह दिया। अगर रन लेते तो खतरा हो सकता था, लेकिन कोई खतरा नहीं है। टीम का कुल स्कोर 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बार रोहित मैत्री के गेंद हल्के हाथों से सम्मान तरीके से खेल दिया था, 1 रन लेने से संतुष्ट। इस 1 रन की सहायता से
टीम का कुल स्कोर 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर कंप्लीशन 5th ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 52, लॉस ऑफ 4 इंपॉर्टेंट विकेट. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಮಿಶ್ರಾ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನಡುವೆ ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಕೂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಯೂಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52, 52 ಕ್ಷಮಿಸಿ 53. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 53. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಯೂಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 53. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಯೂಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರುತ್ವ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ನಡುವ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪಿಯೂಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓಟದ ಬರವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 59 ಓಟಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ ತಂಡ 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರ್ತಿ ಎಸೆತ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 60 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ अंतिम 12 ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. लास्ट 12 बॉल रिमेनिंग नाउ मात्र 12 गेंद बाकी है इनिंग्स समाप्ति के लिए. कितने रन बटोर पाएंगे फिलहाल देखना पड़ेगा. टीम का कुल स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद. नए गेंदबाज अक्षर. बहुत ही अच्छी गेंद. रन का कोई अवसर नहीं है. दूसरी बार अक्षत बदनाकर. बहुत ही अच्छी शॉट उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास किया था. गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रन.
ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 66 ಓಟುಗಳು, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಷತ್ ಭಟ್ನಾಕರ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಟವನ್ನಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 67ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಟವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 68ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕವಾಗಿ 7 ओवर की समाप्ति के बाद फ्रेंड्स प्रोमैक का कुल स्कोर 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स के अंतिम 6 गेंद बाकी हैं। सीबीआर चंद्रशेखर स्ट्राइक पर हैं तो संजय श्रीकांत नॉन स्ट्राइक पर हैं। किस गेंदबाज को जिम्मेदारी देंगे फिलहाल यहां पर देखना पड़ेगा। नीलसन नाइट्स टीम के कप्तान जी हाँ मंजूनाथ को बुलवाया गया है अंतिम ओवर के लिए। 6 गेंद किस तरीके से यहां पर डालेंगे देखना पड़ेगा मंजूनाथ। शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन फील्डर चूंकि 1 रन 2 रन लेने में कामयाब। जी हाँ दूसरा रन भी चुरा लिया बल्लेबाज। जोखिम भरा रन लेने में कामयाब। टीम का कुल स्कोर 70 रन। दूसरी बार फिर से मंजूनाथ सज्जन और बहुत ही अच्छी शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए बहुत लाजवाब कैच मेरे ख्याल से बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का एक जबरदस्त कैच कहला सकता है। ये आप रिप्ले में देख सकते हो अंकुश ने किस तरीके से कैच को अपने झोली में डाल लिया है। बहुत ही खूबसूरत कैच ये हाथ से अपने झोली में डाल लिया था उस गेंद को। बहुत ही जबरदस्त कैच। निश्चित रूप से जितनी भी अंकुश को तारीफ की जाए उतना कम है। आप रिप्ले में देख सकते हो क्या जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अंकुश। और एक विकेट का पतन फ्रेंड्स प्रोमैक की टीम की ओर से। नए बल्लेबाज रवि सीबीआर चंद्रशेखर नाम से करें फिर से मंजूनाथ। बहुत ही खराब गेंद इस बार देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से फिर से और कैच लंबे कद के खिलाड़ी जिन्होंने कहा था कि कर्टली आमबू जैसे दिखने में नजर आते हैं फिलहाल यहां पर और एक झोली में डाल लिए कैच को। इस बार रोहित ने कैच को लपट लिया है आसान तरीके से। 2 गेंद पर 2 विकेट हासिल कर चुके मंजूनाथ सज्जन। क्या यहां पर हैट्रिक विकेट ले सकते हैं देखना पड़ेगा। अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के पहला ऐसा खिलाड़ी कहलाएंगे मंजूनाथ जो कि हैट्रिक लेने में क्या कामयाब होंगे या ना होंगे देखना पड़ेगा। सूर्य नारायण राजू जो कि स्ट्राइक पर मौजूद है। अगर यहां पर हैट्रिक लेंगे तो मंजूनाथ सज्जन इतिहास रच देंगे इस मैदान पर क्योंकि पहला वर्षीय बेंगलुरु कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का एक पहला ऐसा खिलाड़ी कहलाएगा जो गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेने में। और बहुत ही खराब गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फ्री हिट का एक अवसर मिलेगा। देखिए यहां पर निराशा होते हुए क्योंकि यहां पर सिर्फ फ्री हिट में रनआउट का एक अवसर रहेगा उसके बाद जो कैच लेंगे तो नॉट आउट करार दिया जाएगा। तो यहां से मेरे ख्याल से अगर नो बॉल नहीं होता तो थोड़ा सा इनको हैट्रिक लेने में एक बहुत ही अच्छा शुभ अवसर था। देखिए शॉर्ट गेंद थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मंजूनाथ को। मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रन।
टीम का कुल स्कोर 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स के अंतिम 2 गेंद बाकी है मात्र। 2 गेंद पर कितने रन बटोर पाएंगे सूर्य नारायण राजू, देखना पड़ेगा। सूर्य नारायण राजू स्ट्राइक पर है। मंजुनाथ फिर से 5वीं बार लंबी हिट मारना चाहते थे, बल्ले का सही संपर्क नहीं, कीपर के दस्ताना में गेंद जाती हुई। अंतिम 1 गेंद बाकी है 8 ओवर समाप्ति के लिए। टीम का कुल स्कोर 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से मंजुनाथ सज्जन तैयार होते हुए अंतिम गेंद के लिए। मंजुनाथ की गेंद, रन का कोई अवसर नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद फ्रेंड्स फ्लॉमैक का कुल स्कोर 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन 8 ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 75, लॉस ऑफ 6 इंपॉर्टेंट विकेट। 8 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 75 ಓಟಗಳು 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 48 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 76 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. अगर इस मैच को नीलसन नाइट्स जीतना होगा तो 48 गेंद पर 76 रन को बनाना होगा, तभी मैच को जीत हासिल कर सकती है नीलसन नाइट्स की टीम। ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್. 48 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿ ಆಟಗಾರರು ನಿಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೋಹಿತ್. CBRS ಶೇಖರ್ ಆರಂಭಿಕ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೀಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸಲ್ಲ. 76ರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 76ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಅವ್ರನ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ CBRS ಶೇಖರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರನ್ಔಟ್ ನ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಖಾತೆ ತೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸಿ ರವರ ಖಾತೆ ತೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44ಕ್ಕೆ 75 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ CBRS ಶೇಖರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ CBRS ಶೇಖರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಬಲವಾದಂತ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಾಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಿಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಗತವಿಲ್ಲದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು SRR ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀ ಗೃಹ ಕಲ್ಪ ಲೇಔಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೇಔಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SRR ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರು BN ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತನುಮನ ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನೇರ ಗುರಿ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟ ದಾಂಡಿಗನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್ ನ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಟರ್ಸ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ ಸಾಧವ ನಾಡಿದ್ರು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಡಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 10, 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ 36 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 66 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂಡ ಜಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತನನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಸನ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಜಯಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಮಾಕ್ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ್ 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 10 ಓಟಗಳು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 36ಕ್ಕೆ 65 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರುತ ಬಲವಾದಂತ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 12. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 1.1 ಮತ್ತೆ ಸಾಸ್ಕೆ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 1.1 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಸ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರ್ತಿ ಎಸೆತ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 15, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸಿದ ಮರಿತೆಯ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೋಲಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ರೋಹಿತ್ ಮೇತ್ರಿ ಬೀಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ 32ಕ್ಕೆ 59 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀಲ್ಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ಗೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹಳೆ ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1.1 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಸ್ಕೆನ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಮೂರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುದುರಿ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ 30ಕ್ಕೆ 28. ಪ್ರತಾಪ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಮೇತ್ರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1.1 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಸ್ಕೆನ್ ನಡುವೆ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಸ್ಕೆನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಸ್ಕೆನ್ won the toss, elected to ball first. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನೋಡುವ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಂಜಯ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಚಾಲ್ತಿಯ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರ್ತಿ ಎಸೆತ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಮ್ಕನಾಗಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 21ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 26ಕ್ಕೆ 55 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 26 गेंद पर 55 रन चाहिए नीलसन नाइट्स जीत हासिल करने के लिए. प्रताप गौड़ा जो कि गेंदबाजी संभाल रहे हैं, तो स्ट्राइक पर हैं धीरज, नॉन स्ट्राइक पर हैं रोहित मेत्री. इस बार लंबी हिट मारने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज धीरज ने, लेकिन बल्ले का सही संपर्क नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं है. चौथे ओवर की अंतिम एक गेंद बाकी है. टीम का कुल स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर प्रताप गौड़ा. सिर्फ 1 रन मिलेंगे. 1 रन की सहायता से टीम का कुल स्कोर 82 रन 1 विकेट के नुकसान पर. देखिए 1-1 रन से कुछ फायदा नहीं है. अगर मैच को यहां पर जीत हासिल करना होगा तो नीलसन नाइट्स के बल्लेबाज खूनकार तरीके से, धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, तभी कुछ हो सकता है. क्योंकि इमारत जैसा लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं नीलसन नाइट्स के बल्लेबाज. फिलहाल चाहिए 24 गेंद पर 54 रन, 24 balls 54 रन रिक्वायर्ड नाउ. 24ಕ್ಕೆ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. रोहित मेत्री धीरज यहां पर जिम्मेदारी तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, एक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना होगा. एक सलामी बल्लेबाजी रूप में अगर यहां पर मैदान पर डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से
कुछ नीलसन नाइट्स को हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही ज्यादा है, बड़ा है, इमारत जैसा लक्ष्य है। 24 गेंद पर 54 रन चाहिए। इस बार लंबी हिट मारना चाहते थे, बल्ले का सही नंबर नहीं, कैच हो सकता है, देखना पड़ेगा। तीसरे चौथे अटेम्प्ट में कैच को लपक लिया है। ये शायद बल्ले बस थोड़ा सा निराशा होते हुए चौथे अटेम्प्ट में कैच को अपने झोली में डाल लिया है फील्डर सूर्य नारायण राजू। आप रिप्ले में देख सकते हैं, पहली बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश की, उसमें भी सफलता नहीं की है। उसके बाद चौथी बार अपने झोली में डालने में कामयाब होते हुए सूर्य नारायण राजू। देखिए, अगर यहां पर नसीब साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं हो सकता। धीरज को यहां पर नसीब साथ नहीं दिया, इस वजह से कैच दे बैठे सूर्य नारायण राजू को। अभी भी रन चाहिए, 54 रन मात्र 82 गेंद पर। तीसरी गेंद लंबी हिट मारना चाह रहे थे, प्रहार करना चाह रहे थे बल्लेबाज सुंदर रवि के खिलाफ, लेकिन बल्ले का सही संपर्क नहीं, कीपर के दस्तानों में गेंद जाते हुए। 21 गेंद पर 54 रन चाहिए। अगर यहां पर लंबी हिट लगाएंगे तो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो मुश्किल होता जाएगा जो जीतने की उम्मीदें हैं। यार करलिन डिलीवरी थी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। चौथी बार बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर जोखिम भरा रन लेते हुए रनआउट का एक अवसर था, उस अवसर को यहां पर फील्डर ने खो दिया है। एक रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ टीम का कुल स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बीस गेंद पर 53 रन चाहिए। शॉर्ट गेंद भी कट कर दिया था उसको, डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, क्या यहां पर चौका होगा, देखना पड़ेगा। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन। अगर इस तरीके से आप जोखिम भरा शॉट खेलेंगे तो तभी कुछ हो सकता है नीलसन नाइट्स के लिए, क्योंकि इमारत जैसा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पीछा करना होगा तो थोड़ा रिस्की शॉट खेलना होगा, जोखिम भरा शॉट को खेलना होगा। टीम का कुल स्कोर 5 ओवर के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी नीलसन नाइट्स को चाहिए 49 रन 18 गेंदों पर।
बहुत ही अच्छी शॉट, हवा में गेंद देखना पड़ेगा, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर, बहुत ही अच्छी शॉट थी, लेकिन वहां पर गेंद को लपक लिए थे, आखिरी समय पर गेंद को ड्रॉप कर दिया वहां पर फील्डर ने, बहुत ही खराब फील्डिंग, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन। प्रताप घोड़ा गेंदबाज संभालते हुए प्रताप घोड़ा की दूसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, लांगन की दिशा में गेंद जाती हुई, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए 1-1 रन से कुछ फायदा नहीं है नीलसन नाइट्स के लिए, अगर मैच को जीतना होगा तो खूंखार तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, जोखिम भरा शॉट को खेलना ही होगा, चौका छक्का लगाने ही होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो निश्चित रूप से जो जीतने की उम्मीदें हैं वो दूर होती जाएगी नीलसन नाइट्स के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी शॉट है, ड्राइव कर दिया है, मिराज की दिशा में गेंद जाती हुई, रिस्की भरा रन यहां पर लेते हुए, जोखिम भरा रन लेने की कोशिश में अपना बहुमूल्य विकेट को खो दिया है रनआउट के रूप में। टीम का कुल स्कोर 32 रन पर 3 विकेट खो दिया नीलसन नाइट्स। फिर से प्रताप घोड़ा की चौथी गेंद रन लेना चाह रहे थे, लेकिन मना कर दिया वहां पर सुंदर ने, वापसी किया। टीम का कुल स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अक्षत भटनागर नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है सुंदर, पंचिंग गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गैप शॉट थी यहां पर, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। देखिए इस तरीके से आप जोखिम भरा शॉट खेलेंगे तो निश्चित रूप से मैच को जीत हासिल कर सकते हैं, अपने पक्ष में ले सकते हैं नीलसन नाइट्स, नहीं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स प्रोमैक का मैच जीतने की एक संभावना ज्यादा है। टीम का कुल स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंद पर 40 रन चाहिए। अगर मैच को जीत हासिल करना होगा तो नीलसन नाइट्स प्रति ओवर 20-20 रन को बटोरना होगा। क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी नीलसन नाइट्स के बल्लेबाजों द्वारा, देखना पड़ेगा। 7वें ओवर के लिए सीबीआर हसन शेखर को बुलवाया गया है। 7वें ओवर के लिए सीबीआर हसन शेखर को जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। पहले ओवर पर 2 रन देकर एक खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा किया था सीबीआर हसन शेखर ने। देखिए पहली गेंद पर कट करना चाह रहे थे, तेज गति से कीपर के दस्ताना में गेंद पहुंच चुकी थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से सीबीआर हसन शेखर दूसरी बार, इस बार अक्षत भटनागर सम्मानजनक तरीके से खेल रहा था उस गेंद को, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही सूझबूझ के साथ कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं सीबीआर हसन शेखर ने, एक लगातार डॉटेड डिलीवरी डाल रहे हैं, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, नाक में दम करके रखा है सीबीआर हसन शेखर ने। और इस बार देखिए उससे भी उम्दा गेंदबाजी, इसका जो पिछले का गेंद था उससे भी बढ़िया तरीके से गेंद को डाला था सीबीआर हसन शेखर ने। निश्चित रूप से बल्लेबाजों को नाक में दम करके रखा है पर सीबीआर हसन शेखर। टीम का कुल स्कोर 36 रन और बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, नवी तुली गेंदबाजी,
जितने भी तारीफ की जाए सीबा रचंद्रशेखर को उतना कम है, क्योंकि इस समय इस तरीके से गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं है। मुश्किल को आसान में तब्दील कर रहे हैं सीबा रचंद्रशेखर। इस बार फाइनल की दिशा में खेल दिया था बल्लेबाज अक्षर भटनागर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए 1 रन से कुछ फायदा नहीं है। नीलसन मैच को जीतना होगा तो लंबी हिट लगाना ही होगा। फिलहाल इस समय इसी वक्त 7 गेंद पर 39 रन चाहिए, यानी हर गेंद पर 6 रन लगाना होगा। ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गेंद मिड ऑफ की ओर गेंद जाती हुई 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। दूसरा रन लेना चाह रहे थे, रिस्की सिंगल जो टीम बार रन लेने में कामयाब। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद पर 37 रन चाहिए, यानी 6 गेंद पर 6 छक्के भी बटोरेंगे तो निश्चित रूप से मैच टाई होगी। हर गेंद पर 6 रन बटोरेंगे, यानी 6 गेंद पर 6 रन भी 6 छक्के लगाएंगे तो 36 रन होगा। तो जीत हासिल करने के लिए चाहिए 37 रन। अगर यहां पर युवराज सिंह जैसे 6 छक्के लगाएंगे तो मैच टाई होगी। मैच टाई होगी तो निश्चित रूप से सुपर ओवर, यहां पर हमारा आयोजक लोग सूचना दे रहे हैं, सुपर ओवर खिलवाया जाएगा। 6 गेंद पर 37 रन। सुंदर स्ट्राइक पर है। और बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन से संतोष होना है। मेरे ख्याल से यहां पर मैच को जीत हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स प्रोमैक की टीम। और जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाज गेंदबाजों को उतना कम है, क्योंकि फील्डिंग भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स प्रोमैक के खिलाड़ी। फिर से शिव दूसरी बार तैयार होते हुए, शॉर्ट गेंद थी, खेल लिया था उसको। फिर से वही लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं शिवू। टीम का कुल स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंद पर चाहिए 35 रन। अगर 4 छक्के भी लगाएंगे तो निश्चित रूप से 10 रन के एक अंतर से मैच को जीत हासिल कर सकती है। इस बार हवा में गेंद है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से शिवो इस बार लंबी हिट मारना चाहते थे, कीपर के दस्ताने में गेंद जाती हुई। लगभग मैच को यहां पर नीलसन नाइट्स के खिलाफ फ्रेंड्स प्रोमैक जीत हासिल कर चुकी है। मात्र 2 गेंद बाकी है इनिंग समाप्ति के लिए और मैच समाप्ति के लिए भी। 5वीं बार फिर से शिवू स्ट्राइक पर है। सुंदर, बहुत ही खराब गेंद, वहां पर बहुत ही अच्छी स्टंप किया था कीपर ने, लेकिन मदन मड़केरी जो कि स्क्वाड लैग अंपायर है अपील की थी, लेकिन मदन मड़केरी ने वहां पर मुस्कुराकर नॉट आउट करार देते हैं। लेकिन यहां पर वाइड मिलेगा, एक इस वाइड के रूप में अतिरिक्त रन भी मिलेंगे। टीम का कुल स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 गेंद बाकी हैं मैच समाप्ति के लिए। फिर से शिव तैयार होते हुए, स्ट्राइक पर है सुंदर। शॉर्ट गेंद थी, सिर्फ 1 रन लॉन्ग रन की दिशा में स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। टीम का कुल स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 1 गेंद बाकी है। अगला मैच 1.1 और एक टीम है जो कि एक बढ़िया टीम है, निश्चित रूप से अंतिम समय तक लड़ने वाली टीमों में से है सास्केन। जी हां, अगला मैच खेलेगी इस मैदान पर। शायद मेरे ख्याल से पहला दिन का अंतिम मैच होगा इस मैदान पर। देखेंगे विनायक जी डिसाइड करेंगे क्या उसके बाद मैच खिलाना है नहीं खिलाना है। 1.1 और सास्केन के बीच जो खिलाया जा रहा है अगला मैच, उसके बाद अगर समय बचेगा तो खिलाएंगे, नहीं तो निश्चित से
आज का जो पहला दिन का आखिरी मैच होगा इस मैदान पर। जी हाँ, मैच को यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोमैक ने जीत हासिल कर चुकी है नीलसन मैच के खिलाफ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, पुरस्कार होंगे कुछ ही क्षण में बताएंगे हमारे साथी स्कोरर किरण जी। उनको मैं धन्यवाद समर्पित करना चाहूंगा क्योंकि सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं। स्कोर बोर्ड का एक बहुत ही बहुमूल्य किरदार रहता है, वो किरदार को किरण जी निभा रहे हैं। हम विनायक जी की ओर से और SRR संस्था की ओर से हम हृदय से सम्मान करेंगे और धन्यवाद समर्पित करना चाहेंगे। जी हाँ, अगले मैच का जो अंकों का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर रवि जी, जो कि एक मुंबई के एक निवासी है, फिलहाल बेंगलुरु में बहुत ही वर्ष यहाँ पर रह रहे हैं। तो रवि जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, अगले का आंखों का हाल सुनाएं इंग्लिश में।
The next match begin between 1 Point Conquerors and Silicon. Silicon Strikers won the toss and elected to field, and they invited 1 Point Conquerors to bat first. First ball, first runs on the board straight away for 1 Point Conquerors. Loud appeal on that occasion, excellent delivery, slightly pitch outside off stump and move towards outside, and no whatsoever attempt by batter. He just kicked the ball going to the keeper and dot ball. Over pitch at this time. Tried to go for a big swing of the bat, but total miss. Lack of timing resulted into a yet another dot ball. And this time a wicket down, it seems. We'll have to wait and see. Excellent shot, nicely fielded, excellent throw, straight to fielder, the bowler himself, and wicket out given by the umpire. Wicket down on the first over on the score of 3 for 1 Point Conquerors. Yeah, it was really fantastic effort from the bowler himself, because there was a chance of fumble, but he managed that quite really well. And you see, this is not a professional kind of cricket. They come from work and they play cricket for fun, but still they manage to play some professional cricket here. You must really appreciate the effort from the bowlers and the batters, who are doing really well from the morning. And it's a very good atmosphere to be here and to do batting, because it's a batting friendly pitch, and it was perfectly organized from the organizer himself, Mr. Vinayak, who's a happy man today. And there goes the second wicket for the score of 3 runs, and they are looking really confident at this stage, because they are making no mistake and they are targeting the batsman. And this is what you say, a perfect chance to grab some quick wickets, I can say. It's a really good format, 8 hours match, and you got ample number of opportunity to prove yourself down and put some really good runs on the board, and that is what you have to do when you're batting first. But now the tables, I mean the plates have been changed. The bowlers looking so confident, and they are continuously taking the wickets down. And this time he is trying for the wicket. You can see the previous ball also, and it was like very much near to the stump, and he was able to pluck the wicket. But now the umpire signaling it as a wide. The runs are coming in the form of extras. You can see some cheeky batting from the batsman. He's trying to scoop away the ball, but he missed it completely. And with that, the dot ball has been added to the total. A change in the commentary. Again.
Score is on 4 after 2 wickets loss. 1.2 overs completed. Tried to go for a big swing of the bat, slightly down the leg side. Ball just passed from the over the leg stump and dot ball on the occasion for Silicon Strikers. End of 2 overs. The score is on 9 for the loss of 3 wickets. They have lost 3 quick wickets, the 1-point conquerors, and Silicon Strikers are getting into the act in the power play. The power play goes to Silicon Strikers. Yeah, it was not really kind of cricket you were expecting, because you lost only 3 wickets at the point of 9 runs, and that was not really meant, because at the early stage you got power plays, you need to utilize the power plays well, and you got ample fielding option where you can score some quick runs, whether it might be boundary or a 6. But definitely you need to boost your score when you are having a power play opportunity. But you can see here, after the completion of the 12 balls, and they have just considered 9 runs, I don't think so it will make them that much easy to consider a really good total. Do you think so? See, that is what they try to do, try to get the runs in the power play, and in effort of getting those runs, they lost their 3 wickets. And you know, in power play, anything is possible. You might get more runs or you might get the wicket loss. Slow delivery this time, the bowler totally changed the pace of the ball, and the batter had absolutely no clue. He was expecting the quicker delivery, as it was the first ball of the over. The batter had absolutely no choice playing except the defensive shot. Manoj, the bowler, to Venkatesh. Played on to the onside this time towards square leg. Misfield and 4 runs. That's the boundary that they were looking for quite a long time, but this time they're successful. Got 4 runs added to the tally. The score has moved to 13. The score gets into the double figures. Short pitch delivery, got on the position onto that back foot, and nicely directed that ball to square leg, and the fielder couldn't hold on to that. Misfield allowed the batter to get those boundary. Played on to the back foot this time. Again, this time on the offside towards point. The deep point fielder comes in and restricts the batter only for single. Score moves on to 14. As they get the boundaries, as they do effort to get boundaries and sixes, they also need to make sure that they keep adding runs in singles and doubles, keep the strike rotating. That makes the bowler's jobs difficult. Oh, this time again up attempt of a cut shot, way outside off stump delivery, but it looks like that shuffle from the batter
made umpire think that that was not wide. So no signal from the umpire on that occasion. Yes, exactly. Scoring runs is not in the form of six or boundaries. It's about rotating the strike simultaneously, because when you keep on rotating the strike, the opponents will think it is very difficult to like make a field arrangements also. But the way the batsmen are batting, I think Venkatesh needs to get more number of strikes, because he's a tall man. He can score some boundaries along with the sensible batting stuffs he can do. Now look at the kind of shot he played. He scored a boundary also in this over by playing that kind of pull shot. And with that, the over is also complete. After the completion of 3 overs, is 16 on the board for the loss of 3 wickets. They are looking really bit confidence, I think so. After a sudden fall of 3 wickets, it's now they are trying to pump up the scorecard, and it is moving to 16 now. And the bowlers is also putting some effort to bring themselves back. At the early stage, they developed some momentum, and it was really helpful for them. And now the batsmen, you can see the talks going on between the batsmen, because they know how important this wicket is, because it's already 3 down now, and the batter knows how important this is. So again, there is a change in bowling, and Dilip, the new bowler, is brought into the attack. You can see the tall man, Venkatesh, whether he is able to score some runs for his team. Oh, very well played. And now they are rotating it on for a single. And the scoreboard is moving on to 17. 3.1 over gone. Now again the change in the commentary, the change in the voice, the more delightful voice we have in the commentary box. Thank you, Sajjan. 17 for 3 after 3.1 overs. If they are going to bat in this fashion, they might reach to around 42, 45. That is what the projected score right now. Precisely 43, it seems. Slow delivery again. The ball kept low on that occasion. Good to see that it's not the, throughout the day we are having matches on this pitch. And good to see that these are not the Astro tough wickets, these are real tough wickets, and the ball will definitely, even if being a tennis ball, it might do some movement if you have that skill. This time played on the onside switch hit. Attempt of a switch hit was there, but only single to the tally is what the 1 point conquerors will get. 18 for 3. Oh, what a shot that is. Excellent one. Couple of bounces to the fielder. He couldn't, that ball didn't reach the boundary. There was a protection on the deep mid wicket. 20 on the board. Last 2 balls remaining from the 4th over. Venkatesh gets into double figures. 10 with those couple of runs. Oh, he goes big this time. Ball lands safe. Couple of bounces to fielder again at long on, and he will get single. End of 4 overs. The score is on 22 for 3. We are halfway down to the first innings. 4 overs are completed. 4 overs, that is 24 balls remaining now in this. The last match of the day for Bengaluru Corporate Cricket League Season 1 2026. What a great show from the team of Bengaluru Corporate League. They have done such a great effort for getting all these teams together to come here and play
play this tournament. And wonderful arrangement all together. Must appreciate each and every team member of Bengaluru Cricket League for this season 1. And just to inform you guys that there is a season 2 also coming in near future. On the April 3rd, 4th and 5th. Tried to go for that. He tried putting that ball back into the ground but couldn't do it because that ball got the distance as well as the height, 1 bounce, just sailed over on his head and 4 runs. .27 on the board. Venkatesh is on 11. Shiva is on 9. Madan is a bowler, taken 2 wickets. 11 runs he has given so far. Oh, nice shot. Again to square leg. And this time again a single. Played on the onside, this time to fine leg. There is a fielder from 3rd man who will make the ground to that fine leg region and will save the runs. Only single given on that occasion. Yeah, we can actually say both leading edge or top edge. Leading edge actually it comes to the front, I think. Yes. Leading edge means something that's, hit onto the lead of the bat. Top edge is top of the bat. Top of the now it is a top edge because it's on the top. Grounded shot, straight back to fielder, straight back to bowler, actually. Dot ball on the occasion. End of the 5th over, the score is on 29 for 3. Surgeon, what do you think? 5 overs completed and they are on 29 for 3. What do you think at the end of 8 overs? The 18 balls is what they have. What do you think where they will reach, where they will end up at the end of 8th over? Definitely it's a good score, I can say, on matching into the situations what you're having right now, because it's totally a corporate kind of cricket and you can't expect too many runs on the board because obviously the players they know their capacity and the calibrations. But right now when we saw this game at the early 2 overs, it was not on their side, because after the completion of 5 overs we can see some decent score on the board. It's around 29 for the loss of 3 wickets, and this you can see their personal stats also. Shiva scored 10 runs and Venkatesh scored 12 runs, and they have managed quite really well, putting some decent run on the board. And right now he is going through the off and fielder takes it quite comfortably, and there goes another wicket. And after the fall of 4 wickets, it's 29 and you got still 17 more balls to go. I need to say they are looking, right now they are looking into accelerating and to get some momentum with the bat, but hopefully the partnership has been broken. As you see, they are 4th wicket down right now, and he was playing good at this stage. Now they have a serious trouble, I feel so, because the partnership which went on from the
fall of second wicket was really well. I think now the batsman needs to, new batsman is also at the crease, and now he's opening his blade of the bat, and now he scored a single run off to the mark. And the scorecard is jumping on to 30 after the completion of 5.2 overs. Yeah, still the current run rate is below 6 runs in the air, and this time the run rate might just go up around 5.9. Any new batter, we can't say that he won't go for the shots, but this time Venkatesh goes for the big one. One bounce into the boundary line for 4. He gets the boundary. He moves on to 16. The score has moved to 34. Still 3 balls remaining from the 6th over. He's doing a job for his team in the middle. Oh, big swing of the bat and a miss again. Dot ball. He needs to keep the eyes on the ball first and then try to go for that swing of the bat. Totally missed time. Not satisfied with himself for not getting connection of that. This time he gets a connection, but the ball took the bottom edge of the bat, and only 1 run is what he will be satisfied with. One more run added to tally, 35 for 4, last ball remaining. Six overs completed, 35 for 4. So still the run rate is just below 6 runs now. 12 balls remaining, and it's going to be interesting what's going to happen in the remaining 12 balls. So first ball started off with the dot ball for 1 point Conquerors. Second delivery straight to fielder, only single to the tally. (36 for 4 for 1 point Conquerors). That's an excellent shot, but there is a protection on the deep. The Silicon strikers have placed the fielders right onto that position, not allowing any big shots to happen, restricting batter for either single or a double. Oh, nice pickup shot this time from Venkatesh. Managed to get only 1 run. He was looking for the shot to go over the boundary line. But again, lack of timing, lack of connection, allowed only 1 run to the tally. 38 on the board after 4 wickets down for 1 point Conquerors. Tried to come down the wicket, played onto the onside, over the fielder's head. Sixer on that occasion. Sixer came on that occasion for 1 point Conquerors, and Prakash gets into the act with Venkatesh. Came down the wicket again, but this time straight back to bowler. Another dot ball. And that's the end of the over. After 7 overs, the score is on 44.
Sajan, we were thinking, we were talking about that how many runs they will be able to add. What do you think after 7 overs, 44 for 4? Do you think that's a decent score that they have as of now? And in last 6 balls, if they add another 10 more runs, do you think that they can defeat the total? Definitely, I told you before, you must rotate a maximum number of strikes to Venkatesh because see his personal stats right now. It's moving around 19 runs from the 17 balls. He has managed quite really well because standing as a lone warrior and putting some runs on the board, and now they have managed to 44. It's all because of the partnership which came around between the both batsmen, Shiva and Venkatesh. And right now they have managed to put quite comfortable at the board, and again he's there at the attack mode, and they are like grabbing a quick double run. With that, now the scorecard is moving on to 46 for the loss of 4 wickets. Silicon strikers have managed. At the start they have played bowled really well, but right now looking on the scorecard, 1.1 conquerors are having a slight upper hand, I can feel so. This time a dot ball from Manoj. He's bowling, continuing his next over. 46 for 4. Last 4 balls remaining from the inning now. Oh, slow delivery, full toss. Venkatesh goes big, but there's a fielder. And he takes the catch. Wicket down for 1 point conquerors. Venkatesh, the informed batter, is going to be back into the pavilion. He got out on 21 in 20 deliveries. That's a big blow here for 1 point conquerors. They have lost 5th wicket. That ball was in there for a while. He got the elevation, not the distance, and the fielder making no mistake on the boundary line there, holding on to that catch. Wicket down for 1 point conquerors. Hari Prasad is the new batter. Clean ball. Oh, what's happening in the middle there? Back-to-back wickets. The bowler is on a hat-trick. Sajan, the bowler is on a hat-trick. What do you want to say? I think the bowler is doing some great work with the ball, but I can say the batsmen are having upper hand. Since they have lost 2 consecutive wickets, that doesn't mean they didn't manage the scoring rate well, because after a quick fall they have really managed it well. Venkatesh has tried a lot, and at the last he gave his wicket up, but that doesn't mean you didn't able to score a run which is not defendable. Right now they are at 46 for the loss of 6, but 46 is such a huge total. It's not huge, but this is hat-trick ball. And batsman, the ball is high up in the air. There comes the hat-trick. As you said, there is a hat-trick, and this is the first hat-trick of the tournament registered from Manoj. What a match we are having here. What a match. We have seen a lot of bowlers going for that wickets since morning. But Manoj here doing the trick, doing the magic here in the middle. And he takes the hat-trick, the first one for Bengaluru Corporate Cricket League. BCCL, first hat-trick goes to Manoj for Silicon Strikers. Oh, the bowler Manoj must be very happy with that performance. Last ball coming up. One more wicket, and third umpire decision is what the signal from the leg umpire. We'll have to wait and check what the decision comes from the third umpire. Try to go for that run.
Now there was a call from the third umpire. 1 point Conquerors, they got 47 for the loss of 7 wickets in 8 overs. The Silicon Strikers need 48 runs in 8 overs. We will be back with the live action in some time. Chase begins for Silicon Strikers. Silicon Strikers chasing. .48 is what they're chasing. Ball is in the air. One bounce to the fielder. Runs on the board for Silicon Strikers. 3 balls are done. 2 dot balls to start the over and a single. Devraj yet to open his account. He's on strike. Yet to face the ball. Abhishek faced 3 deliveries. 1 run he's got. He opened his account with that single. Big swing of the bat and a miss. Dot ball again. 2 dot, 1 and dot.
Oh, nice pickup shot this time. Ball is high up in the air and fielder making no mistake there. Easy catch for him. He had ample time. He had ample time to go for that catch. Look at that. Ball was high up in the air and the fielder was just standing there. So Venkatesh is the fielder, tall man, making no mistake there, and catch taken. First wicket down for Silicon Strikers. One for Silicon Strikers. Grounded shot towards mid-off. End of the over. After 1 over, the score is on 1 for 1. Dot ball to end the over. 42 balls remaining. 47 is what they need to win and move to the next round. Dot ball to start the fresh over. One for one after 1.1. It's all one on the scoreboard. Driven fielder chasing down, and there is a protection. The deep mid-wicket fielder coming in and doing the job. Only single allowed by the field there. 2 runs on the board. 46 more needed. 40 balls. Loud appeal, but no LBWs in this tournament, so dot ball will be considered. 46 in 39. That's the equation for Silicon Strikers. Played on the back foot, cut shot, straight to fielder. Excellent fielding, excellent throw. Umpire Madan Bedikari alert there. Signaling that not out, the batter was well in the crease. Oh, switch it this time. Into the gap, and that's a great timing behind that shot. Into the gap, ball raced towards the boundary like a bullet for 4. Six for 1 after 1.5 overs. Last ball remaining from the over. 42 more runs needed. 37 balls is what they have. Silicon Strikers, they need to attack more and more. As we saw, Venkatesh was doing that job. Later we saw Prakash took over. Similar way, these two batters, any one of them need to take control. Played into the gap again. Fielder behind it, nicely fielded. They might look for 2. End of the 2 overs, the score is on 8. Couple of runs to end the over.
after 2 overs, 8 runs on the board, loss of 1 wicket, 36 balls, that is 6 overs remaining, 40 is what they need to win now. Clean ball, wicket down. Venkatesh starts off with a bang. First ball, wicket down for Silicon Strikers in the 3rd over. Tall man making use of that pace. The ball comes quite from the big height. Almost is 5.9 inches. Good to see the young cricketers practicing onto those nets. The future of cricket. Madan is the new batter. Venkatesh will continue. Oh, that's a gem of a delivery. That ball just passed near to stumps, missed by few inches. Could have been one more wicket. But no damage done and dot ball. No damage done for Silicon Strikers. Straight to fielder at gully. Taken a single. Right now Silicon Strikers need some big shots, but they are getting runs in singles and they are just adding whenever they are getting an opportunity to go for those singles and doubles. Prasad comes on strike. He is batting on 6. 5 deliveries he has faced. Venkatesh continues. Defensive shot. Single taken. The runs gets into double figures. 38 more needed to win. And that there you can see Bangalore's life, the metro. We are at JMR Cricket Ground for Bengaluru Corporate Cricket League BCCL Season 1. Played on the long on this time and taken a single again. So after 3 overs, the score is now 12 for 2. We saw earlier down the leg side and wide signal by the umpire. Umpire having no hesitation there for stretching his arms to signal that
That was way down the leg side. Extra run added to tally. 13 on the board for 2. Played onto the back foot towards gully and single again. We saw similar scoring rate when the team batted first. One-point conquerors. The similar run rate they were batting at. Venkatesh in between elevated their innings, and they need someone like a Venkatesh here to elevate the innings for Silicon Strikers. Oh, played onto the onside nicely, but there is a protection. The fielding is well set, not allowing batters to go for any big shots. 16 on the board, allowing only singles and doubles at this stage. Oh, that's a good delivery again. Big swing and a miss. Dot ball. And these dot balls will create more and more pressures on the batter for sure. 32 needed, 26 balls remaining. One more dot ball. One more swing and a miss. And definitely we will have one more over from Venkatesh. That was a successful over, the previous one. That restricted the batters from getting those required run rate. And here Ashok doing the job. One more dot ball. That's the dot ball to end the over. After 4 overs, the score is on 16. For the loss of 2 wickets. Sixteen for 2. We are getting into the 5th over of this match. After that drinks break, the short drinks break, back into the game. Surely I think Venkatesh will continue. No, Harish is the guy, Harish is the bowler who will continue with the next over for 1 point. Sixer came on that occasion. On the very first ball of the fresh over, the score has moved to 22. Prasad, he moves on to 16, 10 balls. All eyes are on Prasad at this moment. Goes for the grounded shot this time towards long off. He might look for 2. No, satisfied with that single. 25 more needed.
Excellent delivery. The 7-dot ball. 21 deliveries remaining now. 7 runs already from the over. 23 for 2 after 4.3. 25 more needed. Opens delivery, played on the long off. Again, the fielder coming from that long off to mid off, but couldn't receive the batter for that single. 24 is what Silicon Strikers got on the board for the loss of 2 wickets. 24 more needed. They are halfway down to their target. In 20 balls, 24 needed. Anything can happen from here on. Oh, what a nice pickup shot. That was switch hit and nicely picked up. 4 runs is what Madan Medkeri signaling with his unique style. 20 required, 19 balls remaining. The difference between the runs and the ball is just 1 at one point of time. They've needed 48 in 48 deliveries. They lost couple of wickets, but now they are on roll. 20 more required, 19 balls remaining. Grounded shot, opens delivery. Tried to york the batter on that occasion. Single to end the over. After 5 overs, the score is on 29. .1 Conquerors were exactly on this position after 5 overs. 5 overs 29. Their run rate was just below 6 runs after 5 overs. They need 19 in 18 deliveries. The Silicon Strikers, they are chasing down 48 as a target. Prasad batting on 22. Out of those 29, it's a big contribution from Prasad. That is 22 in 13 deliveries. New bowler Venkatesh will be starting his second over of his quota from the other end. Surprisingly, that he is changing his end to for the bowling. Yorker leg delivery, fuller one. Nicely negotiated, straight back to bowler, dot ball to start the over. In the previous over, he got the wicket on the very first ball, but this time a dot ball to start. In the air, and we'll have to wait and see where the ball has gone. And catch taken, so Venkatesh gets his second wicket. Ball went high up in the air and it went to long on region, and excellent catch taken in the end. 1 more wicket down and 1 more wicket for Venkatesh. The fielder is very happy. All the happy expressions from the fielder for that excellent catch. Wicket down, 29 for 3. Still 19 more runs needed. 16 balls remaining. The 7-dot ball. First ball dot, second ball wicket, third ball dot. This over is turning out to be a very good over for 1 point Conquerors. Again a fuller length delivery, tried to york the batter. Batter absolutely had no room for any shot except the defensive one.
He just needed to defend that shot. One more dot ball. Ball took the inside edge. It seems loud appeal there. Didn't carry to the wicketkeeper, it seems. One more dot ball. 13 balls, 19 runs is what they need. Quite unfortunate that Prasad got out in this over, and this has changed the entire course for Silicon Strikers. Maiden wicket over for Venkatesh. 2 overs, 1 maiden, 2 wicket. What a spell from Venkatesh. Excellent one. 12 balls remaining, 19 runs required to win for Silicon Strikers, and batter Anurag and batter Madan, they need to do some magic in the middle to get those 19 runs in 12 deliveries. Tried to go for a switch at this time. Dot ball to start the over. 11 balls remaining now. 19 required to win. Clean ball. No, sorry. Ball just missed the stumps by few inches. That was very close. That was a close call on that occasion. It initially first looked like the batter actually got clean bowled, but the ball just missed by few inches, few centimeters. This time pulled away to square leg. There is a fielder who will cut off. 9 balls remaining, 18 required. This time single again to Silicon Strikers. 31 on the board for the loss of 3 wickets. 8 balls remaining now, and 17 is what they need. It doesn't look impossible, but slightly looking difficult, as there might be a pressure on the batter. Played on to the long on. Taken a single again. So Silicon Strikers still dealing in singles. 32 on the board. 16 required, 7 balls remaining. Loud appeal there for caught behind and given out. Batter will walk back. Wicket followed the last ball. 32 for 4 after 7 overs. Last 6 balls remaining. And what they need is 16 runs to win. Will be interesting to see what the next batter can do in this last and final over of the day. Can they get those 16 runs that they need to win and move to the next round, or 1 point will pass through the next round? One exciting match we are seeing at JMR Cricket Ground in Bengaluru Corporate Cricket League. Play to the gap, 4 runs. Oh, what a start for the over. Super start. Charan is the bowler. He has taken 2 wickets. 4 runs he has given in the previous over.
that he bowled, and this time he goes to the boundary on the very first ball. 12 leaded now in 5 deliveries. (32 for 4). 12 required. 5 balls remaining. Can Silicon Strikers get more boundaries like this in the final over? Over the fielder's head. But this time, maybe couple of runs. So 6 runs came on that occasion. Couple of more runs of 8 runs so far. 8 runs remaining. 3 balls is what left. Where this match is heading? Is this match heading to the super over? Dot ball. Two balls, 8 runs. Will this match go into super over? Pulled away. This time fielder is there. 7 runs is what they need, and what a situation we are at. 1 ball remaining, 7 runs required. If they get a 6, it's going to be super over. If they don't get, then 1 point conquerors will conquer this match. Oh, goes for the big one. Is it going to be 6? Scores are level. After 8 overs, what a match. What a match. We just predicted. If they get a 6er, it will be a super over. Or if they don't get, we'll have to wait and see.
Sojan, what do you think? We saw an excellent match. Oh, what a match this is. What a match. The last final one of the day. We are in the super over of this match. 47 runs on the board from 1 Point Conquerors, 47 from Silicon Strikers, and finally we are on to the super over. The Silicon Strikers will continue. Falling 7 for 4. Now we are on the super over. Let's see what we are going to see in the super over. What a match for Bengaluru Corporate Cricket League. We saw everything in this match. We saw a hat-trick. Then now we are seeing the super over. Right to start the over. The super over. Oh, what we have seen in this match. We saw a hat-trick. We saw some big shots from Venkatesh. And finally now we are on to the super over. Silicon Strikers, one on the board with that wide. Played on to the longer on for. Oh, this field. Ball will race it out, it seems. Oh, slow outfield there. And batter managed to get those couple of runs. Three runs is what they have taken by running in between the wicket. So 4 on the board. Last 5 legal deliveries remaining in this super over. Oh, what a match we are having for Bengaluru Corporate Cricket League. We saw exactly 48 balls in the first innings. 48 runs were scored. Silicon Strikers went for that. 47 they won. They got. This is a beauty of corporate league. So 4 for no loss. Dot ball on that occasion. Tried to go for a pull shot. Ball just went over the leg stump. Umpire Madan Medikeri not interested in giving any signal on that occasion. That ball just moved over the leg stump. 2 dot balls in a row from Charan. Charan continues. Surprisingly, Prasad it at the non-strikers in. Inside edge. Single taken. Prasad comes on strike. On the offside. 2 runs is what to the tally. Score has moved to 7. Last ball remaining from the super over in the first innings. Silicon Strikers got that opportunity to get back into this game with that super over. Oh, nice shot. Excellent one. Into the gap. 4 runs. That's a welcome boundary
for Silicon Strikers. 11 runs on the board in the end. 12 required in 6 deliveries. And for sure, I don't have any doubt that the tall guy, Venkatesh, we will see in the middle. Interesting to see who is going to join him. 11 on the board in the super over for Silicon Strikers. Prasad got 9. Karthi Ken got 1 and 1 extra. So 11 runs is what they have added to the scoreboard. We'll have to wait for a couple of minutes the two teams to get back onto the ground. Silicon Strikers are back on the ground to defend that 11 runs. One point conquerors. They need 12 runs to win. Venkatesh. Venkatesh on strike. First ball. Grounded shot straight to fielder. Single is what they have got. 5 balls, 10 runs to win. 10 runs is what they need in 5 deliveries. Sorry. 5 balls, 11 runs. Venkatesh wanted to go for the big hit, but only managed to get a single. 11 more needed in 5 deliveries. Ratik is the batter on strike now. And with the ball, Prasad. Prasad has given a great performance in this match with the bat and the ball both. Oh, goes in the air. We'll have to wait and see. Wicket down. Wicket down for 1.1 Conquerors. That's the big hit that attempted by the batter. But the fielder doing the job on the boundary line. The fielder took second catch of this match so far. Very, very safe hands. 4 balls remaining, 11. They still need
Ritik. New batter. Oh, this time the new batter goes big. Ball is in the air. One more wicket down. And I think that's it. That's the victory for Silicon Strikers. They took those 2 wickets and sent both the batters back into the pavilion. What a show from them. The way they started this match, they restricted the opponent team for 47 runs, and they got exactly the same runs on the board. In the super over, they got 11 runs, 12 was the target, and 2 back-to-back wickets. 2 back-to-back wickets and victory for Silicon Strikers. What a end of the day for this tournament for Bengaluru Corporate Cricket League. We are going to see similar exciting and thrilling matches tomorrow. That's it from the Combox, and we will see you all tomorrow at 8 a.m. Thank you.